Good afternoon, everyone. I, CA Raj Chawla, welcome you all in this today's webinar on startup. And today we have very senior bureaucrat, Dr. Ajay Dua ji with us. Welcome, Dua sir. Thank you, sir. And also we have CA Sunil Garji, a very senior chartered accountant, very prominent, a TV figure. And also we have with us with panel our past chairman, NIRC of Company Secretary Institute, CS CMA Yogesh Gupta ji. I welcome you, sir. Thank you. We are honored to have CA Shashi Gupta ji, our very senior chartered accountant. Welcome you, sir. We also have CA Tanuj Singla ji, a young and dynamic chartered accountant. I welcome you, sir. I welcome all the participants and members attending and watching our this webinar. And now I request CA Shashi Gupta ji to please present formal welcome address for our speakers. Thank you, Dr. Raj Chawla. And first of all, it is an honor to welcome today's speakers, namely Dr. Ajay Dua, who is a former secretary of Ministry of Industry and Commerce, a learned man, a very renowned personality on the subject, which he will be covering today. And friends, the point is the topic he's going to take about the startups. That's very important and very pertinent in today's scenario, when particularly the government of India is giving so much emphasis to make India Atam Nirbhar, Atam Nirbhar Bharat. So what I feel is in this scenario, the role of startup is going to be very, very important. And when we will be hearing from a person like Dr. Dua, who was handling the Ministry of Industry and Ministry of Commerce for a long time, so it can't be a better presentation, and who will be going into the nitty-gritties of all the system, how the startups are working, what are the challenges, and how the system has been framed under his leadership in the ministry. So it will be a really live, vibrant discussion from his side. And then we have with us CA Sunil Garg, another prominent chartered accountant, and he will be talking about the various issues which are involved in the taxation. Of course, taxation is very important for any entrepreneur, because directly it is going to affect the cash flows of the enterprise. So one of the ideas of startup is that, as we all know, that the startups are given 3 years tax holiday, right? 3 years tax holiday out of the 10 years, out of the total number 10 years. So that is completely, there is no tax. And then the sections which he will be dealing, section 56 and section 80I. So those are also very important sections, how the startups can plan their organization, how they have to move forward, when they can, take benefit of these sections. So all these details we will be learning from Dr. Dua and Sunil ji, and I wish all the very best. And I think the viewers will have immense, benefit from this today's seminar. Thank you very much for joining us and sharing your experience. Thank you. Thank you, CS Shashi Gupta ji. And now I request CS Yogesh Gupta ji for some opening remark. As pointed out by Shashi Gupta ji, he has rightly said that the focus of the current government is purely on startups. This Atmanirbharta is nothing but the promotion of startups. And I think since the normal industries takes a lot of time to set up, but startups doesn't take too much of time. And this is the high time that startups is going to be promoted in a big way by the government by providing them so much of tax incentives and loans and other benefits. So my request to all the learned speakers will be to cover up these things, that what are the benefits are going to be there, what the registration is going to be happen about the startups, so that the new people who are coming into the startups, they can take full benefit out of this
In fact, today itself, I got a call from one of my friend who want to set up a startup, and he was asking that what is the system, how to go about it. I told him that I will come back to you. So I will be also learning from all of the learned speakers from today's discussion, and I think all the participants also will be a it will be a good learning experience. And it is a very, very valid topic which has been chosen by Dr. Raj Chawla ji. It is a very, very pertinent topic as of today. Most hot topic you can say for the today's seminar in the today's circumstances. So with this, I welcome all the participants and I look forward for the learning from the learned speakers. Thank you very much. Thank you, sir. And now I request Dr. Ajay Duaji to please start his deliberation. Thank you very much, Dr. Chawla, and your colleagues for, I would say, an undeserving, a very flattering introduction. I hope I am able to live up to your expectations. Thank you, sir. Having said that, let me start by saying a lot of people might think that in today's environment, where we are facing a pandemic of uncertain predictability, pandemic about whose size we do not know, his magnitude we do not know. Is this a good time to talk about startups? People here are fighting to survive, and here we start talking about startups. I think it is very important that we discuss this also today for the simple reason I see a lot of changes taking place as we go forward. The startups of yesterday may not remain. I'm being probably a little pessimistic in the future. A lot of businesses which were earlier planned, they may have to recast themselves. The emphasis going forward could be certain other sectors than what was earlier looked at as promising sectors. We will talk about it, but let's just remember that the 27,000 odd startups which have been recognized, I will explain each of these terms a little bit as we go along, by the former Department of Mines, which is now not called DIPP, but DPIIT, because internal trade has been brought into review, has given an analysis that the maximum amount of startups which have been registered ever since this scheme started in 2016 January, 16 January, I think, launched by late Mr. Arun Jaitley after the Prime Minister had announced it on 15th of August of the previous year from the Red Fort. Of the 27,000, the maximum ones are in the field of IT and IT-related businesses. Number two is in healthcare. Healthcare, and I would say that includes biotechnology as well. The third set of businesses is much more in the business of not just developing apps, but that is also a business by itself, but I would say much more people looking at the hospitality and the travel sector, in which people trying to do their bit by bringing in startups there. Then, of course, there are any number of things, but these were the three prominent areas. When I say new things will come up, let's just try and guess what could the new ones do. To my mind, I just tried to think about it in the morning, that we would have one much more contracted stuff. So-called the gig economy will be the one which will undergo the biggest change. And what is a gig economy? Where the supplier of labor or the workers are themselves the contractors also. It might be a one person
setup, it might be a 5% setup, but workers are no longer, you do not take them on an employment basis, but you take them much more on a work-wise basis. I would see, be it drivers, be it cleaners, be it even software workers, be it people in the hospitality industry, be it healthcare workers. I think the way this sector will move is that from a regular formal sector jobs to much more informal and contractual basis. We will have to take the government will have to take care to make sure that the formal do not become informal, because we know then what is the plight of the informal workers. We've just seen what happened to the migrant labor, 8 crores of them, and all of them come, or most of them come within the category of the informal workers. Second, there is going to be a lot more distant education. Now, rather than formal education of schools, colleges, training centers, I expect that digital education or e-education will be an area of focus as things go forward. So the startups would probably have to look into some of those the opportunities which this sector or this industry would throw up. Very quickly, I see the entertainment industry, particularly much with the gaming industry. There will be lot more things happening in the entertainment and gaming industry with people staying much more at home. They're not going out so much, or they're not being required to go out because the regular businesses are going to turn to work from home wherever it is possible. So if you are working from home, you also need to probably indulge yourself or make sure while you are working, your children and other family members have an option. Instead of disturbing you, they keep themselves busy with entertainment, new entertainment opportunities, or smaller or games, etc. So that industry, I see it growing. There was a time I would have emphasized, particularly when the lockdown started, lockdown 1 or lockdown 2. Now we are moving to lockdown 4. At that point of time, I would have said delivery of groceries, delivery of food was an industry which is going to be very big. But I think our warehouses are running out of essentials, and we already see that the exposure of the delivery men to this dreaded disease is making people reluctant. Many of them were migrant workers, casual laborers, and in the last 2 or 3 weeks, their number has come down. You talk to a person who used to send food home or groceries home. Now he says सब शाम तक आएगा, अब मैं गरम खाना नहीं भेज पाऊंगा, fresh खाना नहीं आएगा, because he's got these issues of people, the delivery boys coming less. So, and also I have a feeling that the supply chain having disrupted, the goods from the factories to the warehouses have depleted considerably. So there could be, I'm putting a question mark on the delivery industry. Finally, in the startup game, that was the nature of the industry, how to change. But I think there is going to be an issue also of their financing. There was a time when everybody was very upbeat, saying, look, the government is taking a risk. Government has set up a 10,000 crore corpus fund of funds. Fund of funds was because the government is funding the VCs. The VCs are, as we all know, venture capitalist funds. So this was a fund of fund in which government if government decided to put it 200 crores or say 20 crores in a business, the
venture capitalist, the only condition was that he will also have to put in 20 crores. So there was a de-risking by government coming in. But I think while the government money maybe now continue to be available, because the government has committed 2,500 crores per year for 4 years, starting from the year 2016. So this year we've just entered the 4th year. The government is committed to put that. But already, and Mr. Garg will be talking about how many people have got the tax benefits, etc. But already one could see that the venture capitalists, because they are playing with money, they've been pretty conservative, if I could say, even with the government's 2,500 crores available so far, and per year the money was to be as much. So far, out of only 1,600 crores have been dispersed, and the number of people who got money is still below 300. Out of 27,000 companies, startups, which have been recognized by DIPP or now the DPIIT, only 300 or a little under 300 have as yet received funding from the fund of funds, and the benefits of the tax exemptions, be it the 3-year income tax exemption or it is the capital gains advantage. There, the number is closer to 260, not even 300. So when the environment of getting funds, and I'm being very frank, no longer I don't have the cross of having to defend the government because I've left it now for 10 years ago, or I'm in the 11th year. So I think after 10 years you get freed from the cross. You can talk your heart out. So despite the government funding being available, the amount of money which has come in of 1,600 crores over these 4 years is likely to shrink, not because the government will not be putting in money, but because the venture capitalists, to avail of this government funding, for which money comes through the SIDBI, the Small Industry Development Bank, the government gives the money to it, and the money then it goes to funds, and the funds have to match it before they can draw upon the SIDBI funding. That could see a degree of problem. Finally, the change there I see is everything as of now has become uncertain. Not only the past plans would have become what people had thought of the startups in the month of March of this year, would suddenly find that those business plans no longer remain valid. Are they ready? Can they straight away replace them with new business models and start working? I would say no, because the future is still uncertain. We don't know what will be the intensity of this coronavirus. We do not know for how long it will last, and how many people will get impacted, how many businesses consequently will be starting, and when. So that does bring in a degree of uncertainty in this entire scheme of things. Having said that, I like to now move to my second part of my talk or the discussion, which is just giving you a very quick history or the background on the starting of this project. As I said, started in 2016 in order to create in India an ecosystem for innovation and ecosystem for entrepreneurship. All very well said, and the government said we will make this as simple as possible in terms of registration. And registration, the word instead of registration is recognition by the government, and this recognition is compulsory in order to get the benefit of a lot of government schemes which have also been conceived in order to avail of the benefits for these startups. The simpler thing is
that it is possible to do everything in connection with recognition, in connection with registering with any of the government authorities, and even applying for assistance. You can do everything online. The government has created a an online, created a website, and a special section has been created in the DPIIT, which is the startup section. You do not have to go to them. It is well staffed, and you can do all your business with them online. What is for recognition? What do you need to do? Very simple. One is a certificate of incorporation of your company, a private limited company, or a partnership, or a limited partnership, their registration certificates or the partnership deeds. Number two, you have to also give a turnover certificate from a merchant banker, class 1 merchant banker, in terms of the SEBI recognition, that what is your turnover of the company. And before I say this, I should say also that the requirement is that when you apply for recognition, you should be less than 10-year-old company from the time you have incorporated or registered. If you had done these things more than 10 years ago, then you are not eligible for benefits or recognition as a startup. Third requirement is, of course, we talked of the other two, that you would also have to explain how this startup is going to be innovative, how is it scalable, and when I say innovative, in terms of any product or service, improving its efficacy, new products, or it is scalable, that it will not always remain at that size, and also that it should have potential of either creating wealth or creating more employment. So it is more like a website of your company, which indicates the business model, what you are doing, and what is your business model. If you do not have a website, even then it can work. You have to give a set of your proposal. So with these four things, if you unload it, the government looks at it fairly quickly, and there are enough helpers in the business, people have come forward to help out people for a consideration. The general experience is that if this first form 1 is filled up, you get your recognition within 2 to 3 days, which is a very good thing, that within 2 to 3 days you are registered to get you are registered as a startup. 27,000 companies till the lockdowns started. I would say end of February, let's put it, at 27,044 units had been registered. And now how many have gone forward, we need to be looking at. Very quickly, I've talked about the age less than 10 years from incorporation. Company type, I mentioned private limited company, registered partnership, limited partnership. Annual turnover less than 100 crores in any of the previous years of your existence. You should not have crossed the turnover figure of more than 100 crores as defined under the Companies Act. Fourth, it has to be an original entity. It is not that an existing company which is split up or restructured, out of that you carve out one more company, or you change the name of the old company, give it a new garb. No, the government is looking for a new company altogether. Finally, as I said, innovative and scalable, and should work towards or development and improvement of a product, process, service, and have a scalable business model with high potential for creation of wealth or employment. This is important because when it comes to what Mr. Garg is going to be talking about,
that it is this particular fifth requirement which an interministerial board looks at, takes a long time, and that is the board which really looks at it from the purposes of giving a tax benefit of whether 3 exemption from income tax for any 3 years in the previous 10 years, and second, the so-called angel exemption from angel investment, and third, the capital gains benefit for investors who are putting their money in the new businesses. Now, another benefit which is available is self-certification, and I'll be quick. The government, right from beginning, has exempted the startups from 9 central laws for a period of 3 years, not the entire duration. And what are these 3 laws? Or the 3 of them are environment-related laws with respect to water pollution cess, and air pollution. 6 of them are labor laws. And the labor laws, I think, are important because we are currently talking about a lot about labor, and I will quickly read them out. One is the Building and Other Construction Workers Act of 1996. Second, Interstate Migrant Workmen Act. Third, Payment of Gratuity Act. Fourth, Contract Labor Act of 1970. Then the EPF Act of 52 and the ESIC Act of 1948. So from these 9 laws, the government has given an exemption to the startups, those who have obtained the recognition. But if there is a complaint, and it is a verifiable complaint, then that a person is not observing these, he has done self-certification that he is fulfilling these, then a government inspector can come and check. Otherwise, there is no need for a government inspector to come at all to look at it. The government has also started as a facility a Startup India Hub. 4 lakh Startup India Hubs have been created. What are these hubs? Government has identified mentors, friends, and helpers who are available to help out small industries, who help out small or let's say called startups in different manners, be it in registration, be it in choosing a project, be it in how to obtain help, all kinds of clarifications, etc. available. One through these hubs, which are physically people, and the other through rolling out of mobile apps. A lot of mobile apps on the government-created mobile app, it's a DPI IIT app. You are able to get a lot of issues of yours clarified. Legal support is also being given by the government to the startups, particularly in terms of patents. The Patent Controller General of Patent has notified, 1, a quick line, fast-tracking the applications for patents, and second, 80% of the fee of patenting is exempted from, so the startups only pay 20% of the applicable fee. Finally, I said, no, let me put it not finally, one more. And that's where I'm saying some poor startups which will fold up now because of this COVID. Winding up under the IBC process is being specifically provided for startups that it will be done within 90 days, not 270 days, and within 3 months. And the moment an IPR and a resolution, insolvency resolution professional takes over, IRP, then he will, within 6 months, settle all the creditors, etc., according to that waterhead arrangement, and your liability will be, if you are a limited partnership, as per that, and no more than that. So, which is a very good way, I would say, of going forward. Funding support I have talked about. There is also a talk about credit guarantee
for startups. Government has earmarked a corpus of 500 crores, but I think whether it should be done through the National Credit Guarantee Trust or a SIDBI line of guarantee, those things, there is still not a full clarity on that, and there is I would call it a work under progress. Another benefit which the government, from the government side, the facility is, it is clubbed under what's called industry, academia, partnership and incubation. Startup festivals, state-wise, nation-wise, international, are available under this. Then under the Atal Innovation Mission, Atal Bihari Vajpayee's launch, their self-employment and talent utilization, provision for innovation, centers being set up, awards being given. Private sector is being, now this is important, private sector incubation centers, which will be run by the private sector, but 40% funding coming from central government, 40% from state governments, only 20% from the private people, but they have the control and management, and 35 such incubation centers have already been set up. Startup parks, where new research parks for what kind of work can be done by the startups in scientific terms, technology being promoted by government, and special schemes for biotechnology sector, where the government has almost subsector of the health sector is biotechnology, which they have created, and of course focus programs for students have been worked out under this. I would say, now closing up with my half an hour time coming to an end, I would say a lot of things have happened, but a lot more need to happen. If 27,000 people have got recognition, we need to say how many are actually operating. Some have been a roaring success, but just because 40, 50 of them have become very big, they've sold off the Flipkarts of the world, Snapdeals, and others, Olas, OOs. That's not the representatives of startup. What are the problems in those? What is required? Number one. Second, how many of women entrepreneurs are involved? The number as of now is not 50-50, but as usual, tilted in favor of men, because many of these, as I said, are sectors in IT, women are very strong, hospitality, they are very strong, healthcare, the number is small. Third, the tax exemptions given by the government continue to, or finally the funding, the number of them funded through the VCs so that they could scale up, being under 300, and the tax exemptions about which Mr. Garg will be speaking is limited to, so far, only 266 companies. And that, as a start with, available all through the evening to talk more. Thank you, Rajji. Thank you, Raja. Thank you very much, sir. Thank you for your guidance and your knowledge shared with our members, and I am very much thankful to you, sir. And now I request CA Sunil Garg. Sunil Garg, please unmute yourself. Unmute, sir. Sunil ji. Yeah. Good evening. Namaskar. First of all, I should thank Shriraj Chawla ji for organizing such a beautiful programs, webinars in this COVID-19 time. And it is not only enlightening us, to the viewers, to the participants, and to my younger professionals also. I also thanks who are on the panel now, Shri Yogesh Gupta ji, Shri Shashi Gupta ji, Shri Tanu Singla ji, Dr. Ajay Dua, जो आपने बड़ा अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जो बताया कि क्या बेसिकली है, और डॉक्टर श्री मनोज लांबा जी शायद ऑन द डायस हैं,
तो आज का जो पैनल है, इट्स अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी सीजन एंड वेरी इंटेलिजेंट पैनल। और रादर पैनल की जगह मैं कहूंगा कि ये ज्यूरी है। इतनी इंटेलिजेंट ज्यूरी के सामने बोलना, प्रेजेंट करना, इट विल बी अ टेस्ट फॉर मी माई सेल्फ ऑल्सो, एंड आई होप आई विल fulfill the aspiration of fellow candidate, fellow participants and fellow chartered accountants. तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द टैक्सेशन पार्ट जो दुआ साहब ने मेरे को सौंपा है, लेट मी हैव अ टॉक विद अवर यंगर प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स, हम अगर इस इकोसिस्टम को समझें, स्टार्टअप इंडिया को, तो इट्स ए वेरी गुड एरिया फॉर प्रैक्टिस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में रहते हैं हमेशा। टैक्स ऑडिट है, जीएसटी ऑडिट है, बैंक ऑडिट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, as Dua Sahab has said, 27,000 startups are registered, but more than 50,000 startups are there in India. और अगले 5-4 सालों में मुझे लगता है जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, इट्स 40%। तो अगले 5 सालों में द स्टार्टअप इंडस्ट्री या दिस दे आर सर्टेनली क्रॉसिंग 2 lakhs। दूसरी बात क्या होती है, अगर हम स्टार्टअप को समझ लें, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसके टैक्सेशन के इशू क्या है, तो प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप हो सकता है। रीजन बीइंग दैट जो स्टार्टअप्स होते हैं, दे आर डूइंग ग्लोबल बिजनेस। उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉट ओनली टैक्सेशन, दे इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, देन एडवाइजरी, कंप्लायंसेस। एज दुआ साहब हैज सेड, बहुत सारे कंप्लायंसेस सरकार ने लेबर लॉज को उनके लिए माफ कर दिया 3 साल के लिए, एनवायरमेंटल लॉज को उनको माफ कर दिया है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, फेमा की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम ये सारे चीजों को समझ लें, तो स्टार्टअप को अंडर वन रूफ सर्विस चाहिए होती है। और वो क्योंकि एक आम चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी सर्विसेज नहीं देता है, तो दे गो फॉर द बिग 4, बिग 10, बिग 100, जिनको वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पर उनकी मजबूरी है। तो मैं अपने यंग प्रोफेशनल से एक बात कहूंगा कि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को पढ़िए। स्टार्टअप इंडिया के बाद में इट हैज बिकम वेरी ब्यूटीफुल। सरकार बहुत काम कर रही है। आप देखिए कि स्टार्टअप जो है कितने बड़े हो गए हैं। आपको शायद पता ना हो, पिछले साल 10 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में आए हैं। यूनिकॉर्न क्लब होता है जिसकी नेट वर्थ 7,000 करोड़, $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। आप सोचिए हमारे यहाँ कितनी इंडस्ट्री है जो बिलियंस में जिनकी वैल्यूएशन होती है। फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई। स्विगी विच स्टार्टेड एज ए स्टार्टअप, नाउ इट्स वैल्यूएशन इज 20,000 करोड़, ऑलमोस्ट 3 बिलियन। तो मैं अपने यंग प्रोफेशनल से कहूंगा कि प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टार्टअप। और जब से, जैसे दुआ साहब ने बताया, जब से डेफिनेशन को चेंज किया है स्टार्टअप की, इट्स अ वेरी वाइड। आप अगर नाव बनाते हैं, आप बोतल बनाते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, इट कैन बी अ स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप। हम जब भी स्टार्टअप का नाम सुनते हैं, हम समझते हैं कि शायद कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, कोई आईटी सेक्टर से होना चाहिए। सर, स्विगी क्या करता है, जोमेटो क्या करता है, रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी तो कर रहा है। आई विल कम टू दैट कि हाउ दैट डेफिनेशन हैज चेंज। सरकार ने टैक्सेशन में बहुत सारा रिलीफ दिया है। हम हर एस्पेक्ट को समझेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे, इट हैज बिकम सो सिंपल। और कहाँ का कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, एंजल टैक्स में क्या है, ATIAC में क्या है, पेटेंट में क्या है। नाउ आई स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ द डे। तो राजी, मैं PPT शेयर करता हूं। आगे राजीव। आ गई सर, आ गई। शुड आई स्टार्ट? यस यस, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा, टुडे टॉपिक इज टैक्सेशन ऑफ स्टार्टअप। सरकार ने स्टार्टअप्स को टैक्सेशन में कहाँ का रिलीफ दिया है। हमने कोशिश की है कि हमने सारे जो भी सेक्शंस हैं उनको एक तरफ रखा है। वी विल एनालाइज, डाइसेक्ट ईच एंड एवरी लिम्ब ऑफ द सेक्शंस। व्हाट आर द एग्जम्पशंस स्पेसिफिकली मेंशन फॉर द स्टार्टअप्स? 6 तरह की छूट देती है सरकार। वन इज ATIAC, दैट इज कॉर्पोरेट हॉलीडे, जहां जैसे दुआ साहब ने बताया था कि 3 years, फॉर 3 consecutive years यू कैन हैव 100% exemptions फ्रॉम द
tax. 100% छूट मिलती है for 3 years. Another is the relief from angel tax, that is 56 to 7B. हम बात करेंगे कि एंजल टैक्स होता क्या है, ये क्यों आया, इसको एंजल टैक्स क्यों कहते हैं 56 to 7B को, और किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सरकार ने कहां का रिलीफ देने की कोशिश की है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो 5 सर्कुलर सरकार को लाने पड़े इसको रिलीफ को देने के लिए, इसलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. व्हाट इज द फाइनल सर्कुलर? 19 फरवरी 19 को फाइनल सर्कुलर सरकार लेके आई है, जहां उसने बताया कि नाउ दिस एंटिटी विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द एंजल टैक्स. Third, exemptions which startup can have is of course exemption under the capital gain. 54GB and 54EE. 54GB is almost like 54F. When you sell a residential property, invest into the equity of startup. On the startup purchases the machinery, plant machinery, software, computer, you can get the exemption under section 54GB. 54F की जैसे कैलकुलेशन होती है वही है. 54EE, it is like 54EC, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड फंड में, जिस स्पेसिफाइड फंड का जिक्र सर कर रहे थे दुआ साहब. Another big relief is given by the government of India to the startup is carry forward and set off of loss due to change in the shareholder under section 79. As friends, you know, under 79, if the shareholding changes from 51% or less than 51% of the shareholder change, then you cannot set off the carry forward losses. लेकिन स्टार्टअप में होता क्या है कि 1, 2, 3, 4 साल बाद शेयर होल्डिंग जनरली चेंज हो जाती है, वेंचर कैपिटल आ जाते हैं, वो बड़ी दिक्कत आती थी 51% होल्डिंग को होल्ड करना बाय द प्रोमोटर्स. So now the relief has been given to the startup. We will discuss it. Another change is the ESOP taxation. This year in the Finance Act 2020 ये चेंज आया है. ESOP taxation अभी तक कैसे होता था, आप जब भी किसी को एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन स्टॉक ओनरशिप प्लान देते हैं तो आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, मान लो 200 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू है, 50 रुपए में आपने उस शेयर को दे दिया उसको, तो 150 रुपए को सेक्शन 17(2)(6) में वो इनकम मान ली जाती थी एज ए सैलरी हेड, और उस पर टैक्स देना होता था, उस पर टीडीएस काट लिया जाता था. लोग कहते थे कि साहब हमारे पास में वैसे ही हम कैश क्रंच है, हमारे को खाली शेयर मिले हैं अभी, we have not sold that, we have not received any cash for that. उसके बाद it is a salary income. सरकार ने रिलीफ दिया है उसको 4 साल का, 48 मंथ्स का रिलीफ दिया है, लेकिन फॉर द स्टार्टअप. और उसके बाद में पेटेंट, इट्स ए जनरल डिडक्शन अवेलेबल फॉर द कंपनीज, लेकिन स्टार्टअप को बेसिकली ज्यादा बेनिफिट है इससे, क्योंकि स्टार्टअप बहुत पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमको 3 बातों पे ध्यान बहुत जरूरी रखना है. नंबर 1, रजिस्टर्ड स्टार्टअप क्या होता है, एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है. रजिस्टर्ड स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप और रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप तीनों अलग अलग बातें हैं, तीनों के अलग अलग मायने हैं. एक जैसे जिनको इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से सर्टिफिकेट मिल जाता है आईएमजी से, जैसे दुआ साहब ने बताया था, those are eligible for certain deduction under section 80 IAC. लेकिन 56 to 7B के लिए, एंजल टैक्स के लिए आईएमजी वाली जो कंडीशन है वो हटा दी गई है. यानी रजिस्टर्ड अगर हैं आप खाली, तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं एंजल टैक्स से, लेकिन आपको अगर 80 IAC में छूट लेनी है तो आपको आईएमजी का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. Now we come to the first section, 80 IAC, where you get 3 years deduction from the income tax, 100% deduction. लेकिन इसमें इतनी गलतियां करते हैं लोग, इतनी गलतियां करते हैं क्योंकि सेक्शन में इफ बट किंतु परंतु बहुत सारे हैं, बहुत सारे राइडर्स हैं. We will dissect each and every word of the section. We will understand each and every limb of the section. Then we can understand how to claim the deduction under section 80 IAC. आपको पता है कि 80 IAC में एलिजिबल स्टार्टअप को 3 साल की छूट मिलती है. जैसे मैंने अभी बताया आपको, देखिए जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, यानी आपने अगर DPIIT में फॉर्म 1 जमा करवा के रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो जाते हैं. अगर आपको इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से आपको जब रिकॉग्निशन मिलती है तो आप रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो जाते हैं. Now what this section 80 IAC says, when the gross total income of an SSE includes any business income, and who can be the SSE here, a company or a LLP. Please understand, आप DPIIT की वेबसाइट पे जब जाते हैं, आप कंपनी हो, LLP हो या फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म, तीनों को आप एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड कर सकते हैं.
तीनों को आप मतलब पार्टनरशिप फर्म कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप, बट पार्टनरशिप फर्म आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। 80 IAC में छूट किसको मिलेगी? केवल कंपनी को और LLP को। गर्ग साहब, हाँ जी, एक बार स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए F5 से, फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। फुल स्क्रीन, अच्छा एक सेकंड, फुल स्क्रीन कर दीजिए। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है सर, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। थैंक तो जैसे मैंने बताया 80 IAC के लिए पहली कंडीशन है कि द एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू अ कंपनी और LLP, नॉट टू अ पार्टनरशिप फर्म, बट पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ रजिस्टर्ड startup with DPIIT. Number 2, it should be a eligible startup. Company or LLP should also be eligible startup. जैसे दुआ साहब ने आपको बताया था 10 साल तक एक स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड होता है वो स्टार्टअप रहता है, लेकिन एलिजिबल स्टार्टअप फॉर 80 IAC वो 10 साल वाली कंडीशन नहीं है। इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन आफ्टर 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 21। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई स्टार्टअप 2012 में बना, वो DPIIT की वेबसाइट पे स्टार्टअप तो होगा, वहां पे तो एलिजिबल होगा, लेकिन 80 IAC के लिए वही स्टार्टअप एलिजिबल होंगे जो 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हैं। उनकी इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है। दूसरी कंडीशन एलिजिबल स्टार्टअप की है कि द टर्नओवर ऑफ द कंपनी और द LLP शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़। 25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। एक सर्कुलर आया था DPIIT का, जहां उन्होंने एंजल टैक्स के लिए 100 करोड़ कर दिया था, तो हमने काफी इसकी रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो इस फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2020 में उस 25 करोड़ को 100 करोड़ कर दिया, यानी 80 IAC के लिए भी अब 100 करोड़ रुपए की छूट, अगर आपकी टर्नओवर है आप एलिजिबल स्टार्टअप बने रहेंगे। तो पहली कंडीशन, द कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 21। द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। इससे पहले 1920 के लिए इट वाज 25 करोड़। एंड नंबर थर्ड कंडीशन, that it should have a certificate from the Inter-Ministerial Board of Industry। जहां IMG जो सर्टिफिकेट है वो इसके लिए जरूरी है। अगर 3 कंडीशंस आप पूरी करते हैं, then only you can go for the deduction under section 80 IAC. Number 2, it should include a profit and gains from the eligible business. I will come to the eligible business, जो दुआ साहब ने बताया था उसको एलोबरेट करूंगा कि व्हाट कैन बी एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन DPIIT की और 80 IAC की सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप एलिजिबल बिजनेस होने चाहिए। नंबर 3, केवल आपको जो बिजनेस इनकम होगी उसकी छूट मिलती है 100% फॉर 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। दिक्कत कहां आती है? अगर मान लो एक बार आपकी टर्नओवर 20 करोड़ है, अगले साल आपकी 30 करोड़ हो गई, तो आपको छूट नहीं मिलेगी। वंस यू आर आउट, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप फिर 20-25 करोड़ से कम आ जाए या 100 करोड़ से 2021 के बाद में, लेकिन वंस यू आर आउट यू कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन। इसलिए स्टार्टअप को ये सोचना पड़ेगा, उसके प्रोफेशन को सोचना पड़ेगा व्हेन टू काउंट 3 इयर्स, बिकॉज इट्स 3 ईयर कंसेक्यूटिव। अब जैसे 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया, पहले अप टू फाइनेंस एक्ट 20 दैट हैज एक्सटेंडेड द पीरियड from the 7 years. Earlier the exemption was available 3 consecutive years out of 7 years from the date of incorporation. Now after 2021 suspended 21-22, the deduction will be available 3 consecutive years out of any 10 years. Now you can start the counting either from the 1, 1, 2, 3 or 4, 5, 6 or 7, 8, 9 or 8, 9, 10. Now you have to decide where to start. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, स्टार्टअप की इनकॉर्पोरेशन की डेट्स क्या है, उसके बाद में आप 10 साल तक एलिजिबल स्टार्टअप रहेंगे। तीसरी बात, आपको बिजनेस इनकम की ही छूट मिलेगी। और चौथी बात, आप अगर एक बार आउट हो गए आप वापस नहीं आ सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि मेरी टर्नओवर की जो प्रेडिक्शंस हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो कहां पर जाकर खत्म होती है, तभी आप इस छूट को क्लेम कर सकते हैं। Now, other conditions, and this is the general condition. Whenever we see the section 80 IA, IB, IC, that the company should not be formed by splitting of reconstruction of a business already in existence. कोई पुराने बिजनेस से उसको नहीं बनना चाहिए, except under section 33B, or it should not be formed from the transfer of new business from the plant and machinery previously used by anybody. It's a general condition.
एंड चैप्टर 6 से की जितनी भी डिडक्शंस हैं उस पे ये जनरली होती है. नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एलिजिबल बिजनेस. नाउ व्हाट इज ए एलिजिबल बिजनेस? जब भी हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं हम समझते हैं कि शायद स्टार्टअप का मतलब है कोई टेक्नोलॉजी से, कोई आईटी से. इट इज नॉट लाइक दैट. देयर आर 3 basic, rather 5 things. A business eligible startup engaged in innovation, development and improvement of product. You are making a product, or you have some innovative idea, or you have developed the technology, or you have some improvement in the product, either in the product or in the process or the service industry. All can be a eligible startup. We should grasp this definition. This definition is so wide. And another addition is that scalable business model. As I said कि लेकिन scalable business model में 2 बातें होनी चाहिए. High potential of generation, employment generation and wealth creation. जैसे मैंने आपको बताया स्विगी, जोमेटो, what they are doing, it's a scalable business model which generates employment, हाई एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन वहां पर होती है. जैसे मैंने बताया अभी आपको 20 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन हो गई है. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. जितने भी स्टार्टअप है, वेदर ओयो रूम्स, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अलीबाबा, शटल, नाइका, ये जितने भी स्टार्टअप है बड़े, ये इन सब में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत है. या जो आईटी इंडस्ट्री है वहां पर इनोवेशन है, इंप्रूवमेंट है और डेवलपमेंट है. While going for the registration with the DPIIT, जैसे सर ने बताया था आपको, दुआ साहब ने, कि आपको फॉर्म 1 फाइल करना होता है. उस फॉर्म 1 के साथ में ही आपको एक राइटअप देना होता है कि हाउ आई एम एलिजिबल, हाउ आई एम डूइंग ए एलिजिबल बिजनेस. क्योंकि जब तक एलिजिबल बिजनेस ही आप डेफिनेशन में नहीं आएंगे तब तक आप एलिजिबल स्टार्टअप नहीं हो सकते. तो एलिजिबल बिजनेस के लिए जब आप उसको बनाएं, आइदर यू शुड हैव ए वेबसाइट और द राइटअप शुड लाइक दैट कि आप इन 4 एरियाज सरकार ने दिए हैं, इसमें आपको कवर होते हैं, देन यू कैन बी अ एलिजिबल स्टार्टअप. इट्स अ वेरी वाइड डेफिनेशन. और आप जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको सलाह दे सकते हैं, आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं. और इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ना. मोबाइल ऐप भी है, आप DPIIT की वेबसाइट पे जाके फॉर्म 1 फिल कर दीजिए, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं. मैंने बताया रजिस्टर्ड स्टार्टअप इज समथिंग डिफरेंट देन रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप. रजिस्टर्ड स्टार्टअप होने से आप 56(2) के बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से. तब आप जाकर ATIAC में छूट क्लेम करते हैं. Another important points while dealing with ATIAC, जो जनरली हम गलती कर देते हैं, हम देखते नहीं है, हम सोचते हैं ATIAC को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है उसमें, उसी सेक्शन में, that mentions that subsection 5, 7, 11 of ATIA will also be applicable, meaning thereby that ATIA के जो 5 सेक्शंस हैं वो इसमें पुट कर दिए. Subsection 5, the eligible business should be the only source of income. अगर मान लो किसी कंपनी के 4-5 बिजनेस हैं, तो जो डिडक्शन क्लेम करने के लिए उसको केवल उसी की मिलेगी जो स्टार्टअप की एलिजिबल डेफिनेशन में आएगा. सेकंड इज द ऑडिटिंग इज मस्ट, बट द 2 other conditions is very very important. If there is a inter group companies transfer, it should be on the fair market value, जिसे हम डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग भी कहते हैं. एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज subsection 10, where the rules of domestic transfer pricing applies. If there is a transaction with a close connection, then it should be at the arm's length price. If it is not at the arm's length price, then the AO will calculate the profit, and then he will decide whether to give you the exemption and how to give you the exemption. While claiming the exemption under section 80 IAC, these points should also be kept in mind. But one thing which the government has not given the relaxation yet, that is the applicability of MAT, because MAT will still be applicable for the startup. You should keep it in mind. And another area, of course, is जैसे मैंने बताया कि आपको जब आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो पहले आपको लॉस की एडजस्टमेंट मिलती है, उसके बाद आप ATIAC की छूट क्लेम करेंगे. तो अगर हम सिचुएशन को देखें तो ये बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन होता है when and how to calculate the deduction and what should be the starting point.
तो आपको एलिजिबल स्टार्टअप, एलिजिबल बिजनेस और स्टार्टिंग पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना है, वेयर टू स्टार्ट दी डिडक्शंस। राज जी आगे चलें या क्वेश्चंस लेने हैं? सर क्वेश्चन भी काफी आगे हैं, अगर आप कहें तो क्वेश्चन ले हाँ, लेते हैं। हाँ ले लेते हैं सर। मैं सर को ले लेता हूं। दुआ सर अभी शायद सीट पे नहीं है। आगे दुआ सर कुछ क्वेश्चन ले लें अपने। एक सेकंड सर। Can you hear me now? यस सर, यस हाँ सर। जी, हाँ जी, Thank you. एक सेकंड सर। तनुज जी, हाँ जी सर। मैं क्वेश्चन को हाईलाइट करूंगा तो आपने बोलना है नाम लेके, सेंटर के नाम से, ठीक है? ठीक है सर। राजीव 2-3 ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हमारा वो है कोई प्रेजेंटेशन। बात नहीं, कोई नहीं, लास्ट में 2 मिनट, लास्ट में सबके लेंगे कोई क्वेश्चन। बात नहीं, ठीक है सर, 2 मिनट सर। ATIAC से रिलेटेड हो या नहीं, अब सर ये सीक्वेंस में ही चलेंगे, जैसे भी होगा। सबसे पहले हाँ तनुज जी। हाँ जी सर। आपको सर क्वेश्चन तो मुझे आयुषी जैन जी का क्वेश्चन है सर, हु इज कॉल्ड स्टार्टअप? सर मेरे को क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे, मेरे को योगेश देखिए सर ने आरुषि जी, मैंने जैसे बताया कि स्टार्टअप कैन बी अ फर्म, कैन बी अ LLP, कैन बी अ कंपनी। आपको DPIT की वेबसाइट पे जाना है और जो एलिजिबल बिजनेस मैंने बताया, इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन, अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हैं, आप स्टार्टअप हो जाते हैं। यू कैन गेट गो देयर एंड रजिस्टर्ड विद द DPIT। Can I just add to that, Rajiv? Yes, Yeah, sir, yeah. yes, sir. I would Indeed. say startup is not something which is a very legal term. Anybody who's starting a business can get called startup. Yes, But yes, yes. to be registered under the Government of India's 2016 startup scheme, it is, and you want to have benefit of certain schemes announced by the government, then you get called a startup only if you are registered with DPIIT. Government cannot take away the English language word startup. That is a free word. But you can call yourself a startup even if you are not eligible for government assistance. But under the government, I am repeating, under the government startup scheme, if you are a company which is less than 10 years old, you are either a private limited company or a partnership or an LLP, and you have a turnover of less than 100 crore rupees, and you are in the business of innovation, or you are doing any work which is making any product, process, or a service better than before, it is scalable, can create wealth for yourself, society, it can create jobs. The company that is given a certificate of recognition by the DPIIT by filling up a form 1, very quickly. From the moment that form is issued, it's an online application, online grant, you become a startup under the Startup India program. The Government of India is the Startup India program. थैंक यू सर। तनु जी नजर आ रही है स्क्रीन पे
क्वेरी आपको अभिषेक राज जी की? यस सर। हाँ सर, अभिषेक राज जी पूछ रहे हैं, प्लानिंग टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड वीसी इज रेडी टू पुट अ मनी इन रिटर्न ऑफ इक्विटी फॉर फ्यूचर फंडिंग, प्लीज सजेस्ट मी अदर source whether I can get money without difficulting my equity. आप बताएंगे या मैं बताऊं साहब? गर्ग साहब आप बताइए। बताइए। नहीं, आप बताइए कहां से और पैसे ला सकते हैं विदाउट गिविंग इक्विटी? It has to be a loan then. If it is not if it is not equity, then Abhishek, then what you are really looking for is somebody putting money by way of debt. I think the debt can come from SIDBI refinancing scheme, because the Small Industry Development Bank of India does refinance banks which are giving money for not just startup. It is either you fit into an R&D scheme for which SIDBI has a line, or it is for, I would say, a special field for the industrial industry. That means you have to also satisfy the condition of small scale industry, MSME, which as the finance minister promised him before, that is being revised now. Investment limit is also being increased, and it is also being linked to turnover. Then it will become more or less in terms of turnover, it will come the same as the Startup India scheme, because there also it is 100 crores. In small scale also it is 100 crores, and in the case of medium scale, turnover is 200. But with an additional condition here that your investment also cannot exceed a particular figure, which is 10 crore rupees. So I think if you do not want to give away equity, the sub scheme of the Government of India, particularly Science and Technology Department, has got grants under technology development, where you have to pass the test of the Department of Science and Technology that it is a technology development which you are taking place, then certain grant is available. Second, the debt under the SIDBI refinance schemes from commercial banks, but it has to fit into the 2 or 3 schemes which SIDBI has for specific. That's how. चले राज जी, आगे चले अब। हाँ तनु जी, बोलिए। next query please. उसके बाद सब पढ़ लेते हैं। अब ले लीजिए 2-4 क्वेरी नहीं। The next section is, चलो कोई नहीं, ठीक है सर। the next section, the next exemptions, and very important exemptions given by the government is this exemption under section 54 GV. Earlier, when this section was brought into the statute books, it was for the MSME industries, and it was applicable till 31st March 17. After that, it is not applicable for the MSME, but it was extended to the startup. 2017 के बाद में now startup can get the exemption under section 54 GB. No other company, the MSME for which the original section was brought now is not eligible. Who can get the exemption? Basic purpose of this exemption is if you are an SSC, if you are an individual or HUF, and you are selling a residential property, it should be a long-term asset. Property may be a plot or house, and you invest the net consideration like 54F in the equity share of a eligible startup. You, an individual, sells a residential property, invests the net consideration into the eligible startup, then, and the startup within 1 year purchases plant and machinery. That is new asset. Plant and machinery now also includes software and computer for the startup. And the assessee, the person, should not own less than 25% of the voting power or shareholding. Earlier, this was 50%. Now it has been reduced for the startup. कि 25% अगर आप shareholding रखते हैं, then also you can have the exemptions. Then you can claim the exemptions from the capital gain. The assessee will get the exemption. The individual will get the exemption from the capital gain.
the calculation of the gain is as it is in section 54F. वो proportionately आपको डिडक्शन मिलती है जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और जितनी कंपनी नई एसेट परचेज कर लेती है. But one thing should be kept in mind: the exemption does not depend on the amount you invest in the company. It depends on the amount of the cost of the new asset. आपने एक असेट बेची, मान लो 1 करोड़ रुपए की, आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, तो 50 लाख पे आपको छूट नहीं मिलेगी. अगर कंपनी ने मान लो 25 लाख रुपए की असेट परचेज की है, तो आपको जो छूट मिलेगी, आपका नेट कंसीडरेशन 1 करोड़ है, असेट की परचेज 25 करोड़ है, तो आपको 25% छूट मिलेगी. तो आपकी इन्वेस्टमेंट में डिपेंड नहीं करता है, छूट डिपेंड करती है. द डिडक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट एंड द कैलकुलेशन, as I said earlier, is almost done as done in case of 54F. Another condition is that, like capital gain account scheme, if the assessee company could not purchase the new asset before, because it has to purchase within a year, so before filing the return of income due date, the company can deposit in capital gain account scheme. But if the deposit is not utilized, then the amount will be taxable in the hands of the individual, not in the hand of the startup. It will be again goes back to the SSE because you are the 25% shareholder there. Earlier the limit was 50%, now it is 25%. And another condition, like another happens in other section of 54 also series, that it should not be transferred within 5 years. Now this condition has also been relaxed. Now the asset software, if it is a software or computer, then 3-year condition is there, otherwise 5-year. And the holding condition has also been now relaxed from 50% to 25%. Now this exemption is available exclusively for the startup, not for the MSME from assessment year after 17 March, assessment year 17-18. And now this has also been extended. This Finance Act has also extended because earlier it was extended for 2 years. Now for further 2 years till March 21, this investment has been. Now you can claim the exemption under section 54GB. Another important deductions or relaxation available for the startup is 54E. It's almost like 54EC when you sell any long-term assets. In 54EC, now the condition is of immovable property, but the 54EE, any long-term asset you can sell. And now if the capital gain is invested in the specified fund, like 54EC, 50 lakhs rupees or within 6 months. And if it is 2 financial years, then also the limit is 50 lakhs and the investment is locked for 3 years. And if you take the loan against that investment, then the security will be deemed to be transferred and the exemption will go. But surprisingly, you will be not too surprised, the government has not notified the specified fund yet. The section was brought on the statute in 2016, but the specified fund has not been notified as yet. And how the government works, Dua Saab better knows, but this deduction, though available, practically not available at the moment. Another important relaxation given to the startup is in section 79. As all of you know, section 79 is applicable to the closely held companies. आप ने जिस साल में लॉस किया और जब आप उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, तो कंडीशंस ऑफ द 79 इज दैट कि जिस साल में आपका लॉस हुआ उसकी लास्ट डे पे जो शेयर होल्डिंग है और जिस साल में आप एडजस्ट कर रहे हैं उसकी लास्ट डे की शेयर होल्डिंग में 51% ऑफ द वोटिंग पावर शुड बी द सेम पर्सन. फॉर एग्जांपल, आपके पास में 15-16 का लॉस है, तो मार्च 16 की जो शेयर होल्डिंग है और मार्च 19 अगर 19-20 असेसमेंट ईयर में आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी सेम. अगर वो सेम नहीं होगी तो 79 बार्स यू दैट ब्लॉक्स द सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस. बट दिस वाज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर द स्टार्टअप. रीजन बीइंग दैट जनरली, जैसे अभी बात हो रही थी, स्टार्टअप बड़े यंग गाइज होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं. They came with the idea, an innovative idea, and once the idea is successful, they need investment. They want venture capital fund or HNI fund or some big investor came there. So
51% होल्डिंग की जो लिमिट थी या 51% वोटिंग पावर की जो लिमिट थी, they were not able to hold it. For startup, special relief has been given. The government has given the exemption. Okay, if you don't have the 51% voting power, but the promoter should be, the shareholder should be same. For example, if there are 3 shareholders of 1/3 each, and each of them gives, say, holding 10% and giving back to the investment company or some venture capital fund. Now they are holding 10%. Even in that case, if all the 3 shareholders are there, jo the promoters say, now you can get the exemption. Another case can be, maybe, मान लो 3 shareholder थे जिनके पास में शेयर होल्डिंग थी और उसमें से एक शेयर होल्डर चला जाता है, तो अगर 51% होल्डिंग, अगर मान लो तीनों शेयर होल्डर नहीं है जब आप सेट ऑफ कर रहे हैं या लॉस को आगे के सालों में, लेकिन अगर 51% होल्डिंग, यानी नाउ यू कैन चूज आइदर one of the condition, either the shareholder should have 51% condition or all the shareholder should be same. हो सकता है उनके पास 1% शेयर होल्डिंग रह जाए, आधा % रह जाए, लेकिन सारे अगर शेयर होल्डर सेम है, तो जो प्रोमोटर शेयर होल्डर है, जब लॉस हुआ था और जिस साल में आप लॉस एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है. इट इज ए ग्रेट रिलैक्सेशन गिवन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, नंबर 1, the loss which can be set off in this section in case of startup is the loss which is incurred within 7 years of incorporation. 7 सालों तक का जो लॉस है वही आपको इसमें छूट मिलेगी, अदरवाइज आप उससे अगले लॉसेस को आप you cannot adjust the losses. Now there's another very good relaxation given to the startup. Now we come to the, yes sir. It was a long pending demand by generally by the companies, but government has now given a relaxation in the Finance Act for eligible startups. And eligible startup means those 3 conditions of ATIAC. Please keep in mind. जो 3 कंडीशन ATIAC की थी वही इसको ले सकते हैं. जब ये सेक्शन आया था, अमेंडमेंट आई थी, लोगों को कंफ्यूजन था कि एनी रिकॉग्नाइज्ड, एनी रजिस्टर्ड स्टार्टअप कैन गेट द बेनिफिट. नहीं सर, केवल उनको मिलेगा जो वो 3 कंडीशन पूरी करते हैं. इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अप्रैल, टर्नओवर लेस देन 100 करोड़, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, दे शुड हैव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम interministerial board. And as Dua Saab has mentioned, out of 26,000 registered startup with the DPIIT, I think it is less than 2,000 who have certificate from the interministerial board. वहां पर बड़ा प्रॉब्लम है. वहां पे रजिस्ट्रेशन, जहां तक रजिस्ट्रेशन है बड़ी जल्दी होता है, IMG का सर्टिफिकेशन बड़ी देर से आता है, बड़ा दिक्कत है. Now what are the change, what is the relaxation specially available to the startup is that अभी तक जो ESOP की टैक्सेशन होती है, जब भी कोई एम्प्लॉयर मान लो एक शेयर देता है किसी एम्प्लॉय को, that he can exercise, he can purchase the share at a predetermined price. For example, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको कंपनी ने कहा कि साहब हमारा जो फेयर मार्केट वैल्यू है कंपनी के शेयर की वो 200 रुपए है, लेकिन अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू ज्वाइन इन 2017, तो हम आपको 3 साल बाद 2020 में यू कैन गेट दिस शेयर एट say 50 rupees and the fair market value is 200 rupees. Now when the employee exercise that right, when the shares are allotted, तो determined price जो था, जब 50 रुपए जहां आपको अलॉट हुआ और जो फेयर मार्केट वैल्यू है 200 रुपए है, मान लो हो सकता है 2020 में 300 हो जाती है, तो डिफरेंस है 150 या 250 जो भी होगा, that is taxable as a income under the head salary income and the as a perquisite 17(2)(6). And when you sell those shares, when the employee sells those shares, the difference between the selling price and the fair market value on which you have already been taxed, then you get the benefit of the that is it's a capital gain depending on the holding period, whether it will be a short term or a long term capital gain. This was the actual position, and this is the actual position except startup. Now फाइनेंस एक्ट 20 में चेंज किया स्टार्टअप के लिए स्पेशली, और वो भी इलिजिबल स्टार्टअप के लिए. फिर यहाँ पे कंफ्यूजन है
कि this deduction is also available to the startup who has been registered, not only registered with the DPIIT, but has also got the certificate from IMG. अगर आपको IMG certificate नहीं है तो ESOP का भी आपको benefit नहीं मिलेगा. Now what is the change? The change is that if you exercise the right of the for a discounted price, you are allotted share by the company, then either of the event which happens earlier, after the expiry of 48 months, 4 साल बाद आप या आपने वो शेयर्स को बेच दें या आपने नौकरी छोड़ दी, you cease to be employee of that person, whichever is earlier. Of course, अगर आपने पहले नौकरी छोड़ दी हो या आप उससे पहले बेच दें या 4 साल के बाद में, then it will be taxable in the hands of the assessee as a perquisite. लेकिन इसमें एक दिक्कत, इसमें जो परेशानी है, जब इसको पढ़ा 1726 that defines the perquisite, but the 1726 still has not been changed by this Finance Act. कहने का मतलब हुआ कि जो डिडक्शन, जो टीडीएस का प्रोविजन को चेंज किया है, उसमें 192(1)(c) को ऐड किया है सरकार ने, 1726 को अभी चेंज नहीं किया, तो एक एनोमली क्रिएट हो गई है. योगेश जी एंड आई विल also take Manoj Lamba ji for that. ये एक एनोमली है कि जहां पर आपकी इनकम की डेफिनेशन में आपको चार्जिंग सेक्शन में आपने चेंज नहीं किया, 192(1)(c) कलेक्शन ऑफ टैक्स या डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय द एम्प्लॉयर है, उसको डेफर किया है. तो हो सकता है कि आईटीआर में या तो कोई चेंज करे सरकार, या फॉर्म 12BA फॉर्म जो आप परक्यूजिट्स का होता है, द चेंज इज डेटेड. नाउ इट्स वेरी क्लियर. In case of the eligible startup which are registered under Section 80 IAC and having a certificate of interministerial board, only they can get this deduction. In case of the ESOP, the liability to pay tax, liability to deduct, collect and pay tax has been deferred on the happening of either of the 3 events. Either the employee left the job, or he sells the shares, or 48 months, whichever is earlier. In that year, it will be taxation. It will be taxed, and it's another relaxation given to the startup. Now we come to the most important part of startup taxation, which is angel tax. Angel tax को लेके बड़े confusions हैं. सरकार ने इसमें इतने घोच-पोच किए, इतने सारे सर्कुलर इशू किए, आज तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है लोगों को कि वैल्यूएशन किससे करवानी है, मर्चेंट बैंकर से करवानी है या नहीं करवानी है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी है, फेयर मार्केट वैल्यू का तरीका क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स. तो सरकार ने पिछले 2 सालों में 5 सर्कुलर इसके ऊपर दिए, 5 सर्कुलर. आई विल कम टू दो सर्कुलर्स. मैंने 5 सर्कुलर को डिस्कस करूंगा टू क्लियर द इशू कि जो ये दिक्कत है या जो परेशानियां हैं, जो कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करने के लिए हमने सारे सर्कुलर को डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस कम टू सेक्शन 5627B. व्हाट इज दिस सेक्शन? बेसिकली दिस सेक्शन वाज इंडक्टेड इन द स्टैट्यूट बुक बाय फाइनेंस एक्ट 2012 बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी. हमारा जो फाइनेंस एक्ट 2012 था, दैट इज वेरी एक्ट, जहां इतने चेंजेस हुए थे बहुत ज्यादा. बेसिकली हो क्या रहा था, अगर हम सब प्रोफेशनल्स हैं, वन टाइम एंट्री आपने सुनी होगी, वन टाइम एंट्री बहुत चलती थी, जहां पे एक कंपनी 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में प्रीमियम अलॉट करती थी, क्योंकि शेयर प्रीमियम में अलॉट किए तो कोई टैक्स नहीं है. उसके बाद में उस शेयर को 2 रुपए डिस्काउंट में, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में बेच देते थे, यानी 8 रुपए का डिस्काउंट में बेच दिया. 100 रुपए में अलॉट किया और 10 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए में बेच दिया. अब 92 रुपीज का जो है वो कहीं भी टैक्स नहीं हुआ करता था, और वो दैट वाज ए मनी लॉन्ड्रिंग. दैट इज कॉल्ड वन टाइम एंट्री इन द जनरल सेंस. तो उसको प्लग करने के लिए सरकार ये सेक्शन लेके आई थी. एंड व्हाट वाज द सेक्शन? इफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्स फ्रॉम अ रेजिडेंट any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such shares, and aggregate consideration received for such shares that exceeds the fair market value. अगर आप का जो
कंसिडरेशन आपने रिसीव किया है और वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की, उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इनकम. फॉर एग्जांपल, द फेयर, मान लो कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की, एक कंपनी है जिसकी शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आती है 20 रुपए, आपने उसको 100 रुपए में अलॉट कर दिया. तो इस सेक्शन में कहा कि साहब 80 रुपए जो होगा, 80 रुपीज, दैट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. दैट वाज सेक्शन 56(2)(b. बेसिकली इट वाज ब्रॉट टू प्लग द न्यूसेंस ऑफ वन टाइम एंट्री. But two exemptions were given in the section. One was that the section will not apply to the non-resident because the section applies to the resident only. Another, if the funds has been received by a venture capital undertaking or venture capital company or venture capital fund, or that is very important, by a company or class of person as may be notified by central government in this behalf. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करते, वो कंपनियां एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, या वेंचर कैपिटल फंड्स अंडरटेकिंग है उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, और नॉन रेजिडेंट पे सेक्शन नहीं लगेगा. सीबीडीटी इसके लिए कोई सर्कुलर लेके नहीं आई है. ऑल द सर्कुलर्स रिगार्डिंग दिस एंजल टैक्स हैज बीन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड. 5 circulars has been issued and the last and final circular came on 19th February 2019. हुआ ये, जब ये स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ 2015 में, अब स्टार्टअप के पास एक आइडिया होता है, क्योंकि द सेक्शन वाज ब्रॉट फॉर द क्लोजली हेल्ड कंपनीज जो ये काम कर रही थी. लेकिन स्टार्टअप को दिक्कत क्या है कि वहां पर उनकी बुक वैल्यू जो होती है कंपनी के शेयर्स की, वो बड़ी कम होती है, उसमें एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसमें आइडिया की कीमत है. अब दिक्कत यह है कि जब उन्होंने शेयर्स अलॉट करने शुरू किए, प्रीमियम चार्ज करना शुरू किए, तो उनको नोटिस दिया डिपार्टमेंट ने. जब ये डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया स्टार्टअप्स को कि साहब ये व्हाई द इनकम शुड नॉट बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b, तो बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ कि साहब ये दिस इज रॉन्ग. Then the government of India came with the first circular in 2017. But before coming to the circular, as I said, the fair market value, how to determine the fair market value? This was the question. And the question has been answered that it should be determined in accordance with the rules prescribed under section 11UA. 11UA में जो rules prescribe किए हैं, क्योंकि इसमें 3 ही बातें हैं, फेस वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है, और बुक वैल्यू. तो फेयर मार्केट वैल्यू हैज टू बी डिसाइडेड एज पर 11UA. और another important point is that another important value as may be substantiated by the company to the satisfaction of the assessing officer. Assessing officer की satisfaction से आप वैल्यू निकलवा लीजिए. इसको कैसे सेटिस्फाई करना है everybody knows, and whichever is higher. Meaning thereby that if you have allotted a share to a company, then the difference between the fair market value and the allotment price, if it is more than fair market value, the difference will be taxable in the hands of the company. Now, how to decide the fair market value? Either you decide as per the prescribed norms. 11UA में 2 दे रखे हैं तरीके. DCF method by prescribed method is a discounted cash flow method to be certified by merchant banker, or the book value method. And another method is also there, that is you satisfy the assessing officer keeping in view the value of the intangible assets, goodwill, patent, copyright, so many things, whichever is higher, that will be treated as, that will be taken as fair market value. Now, as I said, there was a lot of hue and cry when this section came, and when the notices were issued by the startups, then the government came into the picture. They came and they started issuing notification. The first notification was issued on 17th February 2016. As given in the section itself, the class of persons or class of companies as notified by the
Government of India. That was the first notification that who will be exempt from this misuse of angel tax. Why this was angel tax name was coined? Because of the angel investor, they invested the startup company. तो इस नोटिफिकेशन में कहा था सरकार ने कि साहब आप एलिजिबल स्टार्टअप कौन होगा? एलिजिबल स्टार्टअप वो जो 5 years up to the 5 years of incorporation. In 2016, now it is 10 years, and the 25 crore turnover. And the third condition was the definition of eligible business was something different as of today. At that time, it was working towards innovation, development, deployment, commercialization of new product, process or services driven by technology और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जैसे मैंने पहले कहा था कि हम जब स्टार्टअप का मतलब समझते हैं, हम समझते हैं कि कोई ऐसा कंपनी जो टेक्नोलॉजी का काम कर रही हो या आईपीआर से काम कर रही हो, ये वो डेफिनेशन थी. लेकिन ये डेफिनेशन बाद में इतनी चेंज हुई है, उसके बाद में नाउ द स्कोप इज वेरी वाइड. एंड इन दैट सर्कुलर the condition was you should have a certificate from interministerial board as mentioned in section 80 IAC. Now this condition, the last circular, has been removed. Another condition was that it should have a recommendation from an incubator or from Government of India or the authorized agencies, because in this circular there were so much if and buts that the government again came with a circular. And another circular was on 23rd May 2017. 23 मई 17 को, क्योंकि जब ये सर्कुलर आया था उसके बाद ही बड़ी दिक्कतें आ रही थी. सरकार ने फिर एक सर्कुलर दिया, उसमें कहा साहब आप जो 5 साल वाली कंडीशन थी 5 years को 7 years कर दिया कि 7 साल तक आप एलिजिबल स्टार्टअप रहेंगे. दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में आप काम करते हैं, देन द एलिजिबिलिटी विल बी अप टू 10 years. और जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया. अर्लियर इट वाज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और सब आईपीआर. नाउ दिस डेफिनेशन, वाइडर डेफिनेशन वाज इंडक्टेड दैट टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विस, और it is a scalable business model with high potential of employment generation or wealth creation. This is a wider definition and you have to fit yourself in that definition. IMG certificate condition was still there up to 23rd May 2017, and application to get the exemption from angel tax was to be submitted with the Department of Internal Trade and Industries. But again government came with a circular, and all these circular led to section 5627B. Please understand. Now this was on 11th April. And what were the changes? The 7-year, 10-year condition were same. Turnover 25 crore condition was same. The definition of eligible business remains the same. But now new condition were added. If the issue of the share, including share premium, is up to 10 crore, then you will be get a suo motu exemption from the rigorous of section 5627B. आपको अगर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक का आपका इशू है with including the premium, you will be exempt. But condition was imposed, the income of the investor should be 25 lakhs for the 3 years and net worth should be more than 2 crore. Only HNI investors, high net worth individual investor, should invest in the company. Another condition was imposed that you should get a report from the merchant banker as given in Rule 11 UA. Now this condition of merchant banker has also been removed in the final circular and the approval from IMG board. These two conditions were hurting the startups, and a lot of representation were made to the ministry, to the finance ministry, but finance ministry doesn't do anything. Yet another DPIT came with another circular. It was on 17th January 19. In every circular, the rules were made easy. Now, what were the changes? 7-10 years condition remains the same. 25 crore turnover remains the same. And the definition that because already been changed and still that is the definition, it remains the same. Aggregate investment up to 10 crore.
एंड इन्वेस्टर इनकम 25 लाख की जो इन्वेस्टर इनकम थी उसको 50 लाख कर दिया, पता नहीं क्यों किया था। और नेटवर्थ 2 करोड़ की कंडीशन रखी थी। जो मेन प्रॉब्लम थी आईएमजी परमिशन की, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से जो परमिशन लेनी होती है, उसको सरकार ने खत्म कर दिया कि ठीक है जी 56 to 7 के लिए आपको कंडीशन उसकी जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हमको फॉर्म 2 में अप्लाई कर दीजिए, हम उसको सीबीडीटी को भेज देंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 45 डेज में आपको या तो रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा। और वंस दे हैव एक्सेप्टेड यू विल गेट द एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस एंजल टैक्स 56 to 7B। और मर्चेंट बैंकर से जो वैल्यूएशन का जो कंसेप्ट था उसको भी इसमें से हटा दिया गया। तो 2 कंडीशन चेंज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसके ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन था कि साहब आईएमजी से कंडीशन परमिशन नहीं, क्योंकि बहुत लंबा काम है, वो सारे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज कब बैठेंगे। और मर्चेंट बैंकर का जो इशू था उसको भी हटा दिया। बट स्टिल नाउ दिस इज द फाइनल सर्कुलर, जहां सरकार ने अब फाइनल फरवरी 19 में काफी रिलैक्स दिया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटा दिया है। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस नाउ। वन थिंग दैट it was done to 10 years. Eligible startup will remain up to 10 years. Earlier it was 7 years and 10 years for biotechnology. Now the condition 10 years. और जैसे मैंने बताया 80 IAC में 7 years तक था, ये एनोमली क्रिएट हो गई थी। 56(2) के लिए आप 10 साल कह रहे हैं, DPIT के लिए 10 साल कह रहे हैं, 80 IAC के लिए 7 साल कह रहे हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने उसको भी एट पार लिया है। 80 IAC और 56(2) 7B में अब 10 साल की कंडीशन है। एज इट टर्नओवर 100 करोड़ फरवरी 19 में कर दिया था, फरवरी 19 में 100 करोड़ कर दिया था 25 करोड़ से, जबकि फाइनेंस एक्ट 20 में किया है, इसको लास्ट ईयर नहीं किया था। डेफिनेशन इज सेम, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। नाउ यू डोंट रिक्वायर एनी वैल्यूएशन फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर, यू विल गेट द ऑटोमेटिक अप्रूवल फ्रॉम द DPIIT। No CBDT permission, no IMG board approval, nothing required. And in addition to this, exemption has been given to, as I mentioned earlier, that in section itself, the investment from venture capital fund, undertaking and non-resident is always there. But now, investment जो 2 करोड़ की नेटवर्थ 50 लाख की रिटर्न है, उसको हटा दिया। Now, investment from the specified companies, that is also exempt from the category. No certificate, no permission required. But those specified company means who have the 100 crore net worth and 250 crore turnover, and it should be a listed company. But कंडीशन ये लगा दी कि साहब आप इसको कहीं प्रोहिबिटेड असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट की एक लिस्ट दे रखी है, जहाँ व्हीकल्स है, इमोल प्रॉपर्टीज है, पूरी लिस्ट है। वहां पर आपको एप्लीकेशन पे सरकार ने रोक लगा दी है कि आप उसको अप्लाई इन चीजों में नहीं करेंगे। मेनली इमोल प्रॉपर्टी है, लग्जरी कार्स है, अदरवाइज आप कर सकते हैं, एंड यू विल गेट ऑटोमेटिकली एग्जेम्पशन फ्रॉम द एंजल टैक्स। नाउ द फाइनल पोजीशन इज दैट you go to the DPIIT, apply in form number 1, you will get exemption. Then you can apply, then you submit a declaration with the DPIIT that investments and from where you got the investment and no investment of prohibited asset. Then you will get the certificate from DPIIT regarding the purview of the angel tax. But for 80 IAC, you still have to go for the IMG registration. Another important issue is valuation. How to determine the valuation of shares, fair market value of share 11 UA and 11 UAA. Dear friends, अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर हमको शेयर्स की वैल्यूएशन करनी होती है, basically for the closely held companies. And the 3 sections are 50CA. Newly, like 50C, 50CA was inducted in the statute book. 56 to 10 and 56 to 7B. लेकिन इन तीनों के वैल्यूएशन में बेसिकली फर्क है। 56 to 7B की हम बात करते हैं
तो आपको जो वैल्यूएशन का जो 11 यूए रूल है उसमें दो अलग अलग सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 जो है वो एप्लीकेबल है फॉर वैल्यूएशन ऑफ 50 CA एंड 56 to 10। उसमें अगर आप उसको पढ़ते हैं तो द चेंज हैज बीन मेड अर्लियर हाउ टू वैल्यू द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, कि आप शेयर्स की नेट एसेट की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको पेड अप कैपिटल से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ शेयर। बट फॉर द वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ 50 CA and 56 to 10, now while valuing the share of private limited company, we have to now take out 4 items from the asset side, and these items are immovable property, jewelry, artistic work and shares and securities। उसकी आपको मार्केट वैल्यू निकाल के दोबारा एड बैक करनी होगी और उससे आपको शेयर्स की वैल्यू निकाली जाएगी। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज द 50 CA में जो ये चेंज किया है उसका पर्पज ये है कि जो बहुत सारी कंपनियां जहां लैंड होल्डिंग होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अब उसकी बुक वैल्यू तो है मान लो 10 लाख रुपए और उसकी वैल्यूएशन हो गई है 1 करोड़ रुपए। अभी तक क्या होता, कंपनी ट्रांसफर में इमूवेबल प्रॉपर्टी चेंज हो जाया करती थी, उसमें नाइदर यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, नाइदर यू आर पेइंग एनी टैक्सेस। तो अब अगर आप 50 CA के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं या 56 to 10 के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, then you have to keep in mind the valuation method has been changed. You have to go rule 11 UA part 1 subsection 1 where you have to take out the value of the immovable property, jewelry, artistic work and the investment in shares in other companies. Get the market value of those shares, fair market value of that assets, add back with the net worth of the company, and then you can calculate the value of these shares. For the equity share, you have to value like that. And for preferential shares, if you are valuing your shares for fair market value for 50 CA and 56 to 10, if in case of preference share, you can get the value, fair market value be determined by a chartered accountant or a merchant banker. जो chartered accountants 50 CA के लिए chartered accountant और merchant banker किसी से भी आप वैल्यूएशन ले सकते हैं, लेकिन 56 to 7B के लिए वैल्यूएशन का मेथड जो है 11 UA सबसेक्शन 2 में है, वहां पर आपको ये चारों एसेट्स को नहीं निकालना है। इसका मतलब वहां पर जो आपकी बुक वैल्यू है यानी रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इन अदर वर्ड्स इफ वी से, उनको जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स you can calculate, or you can get the valuation by the merchant banker as per the DCF method. Now it is the option of the assessee which value you want to take for the valuation of shares, but it is now not mandatory to go for the valuation by the merchant banker to get exemption under section 56 to 7B from the DPIIT. This is the end of my submission and we can take the questions now. Rajiv? अगर साहब शुरू करें क्वेरी? क्या हुआ गर्ग साहब? हाँ जी करो सर। Should we start? हाँ, we can start sir. अच्छा, Very exhaustive presentation, Sunil ji. Very good. We have tried to Welcome, cover. Manoj. नमस्ते सर। हाँ गुप्ता जी, शशि गुप्ता जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अनम्यूट। यस, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सुनील गर्ग जी का, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को सामने नजर आ रही है, वो बार बार इन्होंने रेफर किया कि जो IMG सर्टिफिकेट है, ये एक मुझे लग रहा है पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत ही बड़ी चीज है। तो मैं डॉक्टर दुआ से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो मंत्रालय में रहे हैं और उनके टेन्योर में और आज की सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं IMG के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। डॉक्टर दुआ प्लीज।
Yeah. Shashiji, all that I'd like to say is that IMG was not a creation in my time, it's much later. this is not to absolve myself of any. But there are 6 ministries. It is chaired by the Additional Secretary of the Ministry of Industries and Commerce, or DPIIT, Additional Secretary. And it has Commerce Ministry, it has Technology Ministry persons. But ultimate call, because it's a tax-related matter, is taken by the Additional Secretary, because it's not, the chairman is Additional Secretary. From other ministries, it's called representative. That's how it is given. Other ministries, the rank of the people is not mentioned. So obviously, in a government hierarchy, if the chairman is additional secretary, other people will send either they are joint secretary or even below deputy secretary or a director. Usually, the revenue department person who would come, he would be playing safe. He is going to be saying that I need to consult. I will get back in the next meeting. And this is no reflection on the officials of Department of Revenue, but they would want to actually go back, look at it very closely, and tell the CBDT persons before coming to say yes. So I am guessing that if you were to analyze, say, half a dozen cases, and that can be asked for even in public domain, under RTI or otherwise, how long did it take? And give us the proceedings of each of these IMG meetings where these 6 cases were discussed. You would see that it would have gone on for a good 10 to 12 meetings, the same case, and everybody would be eagerly awaiting what is the point of view of the Department of Revenue. So it means, so basically, I'm audible? Yes, I can hear you, Shashi. Okay. So basically, as you said, Dr. the problem remains there. On one side, the government is thinking about to making India Atmanirbhar. And on the other side, if the bureaucracy is still holding those grounds, that red tapeism, how the things are going to take shape in the future. So I think, to me, with people like you and Sunil Garg and all the people who are into the this startup business, so they should represent very strongly with the appropriate CII, FICI, and all those things. So otherwise, we will not be able to achieve the objects of the government. That's my view. Actually, I am Sunil Sushil, saying something else, Shashiji. I think the DPIIT suggestion to the DPIIT should be a timeline given for the IMG. That a matter which is put up to IMG, it's like we are telling CBDT that within 45 days, reject it or accept it. This similar restriction, the government should take upon itself and say within 45 days, if an application is put up to them, and as was mentioned by Mr. Garg, now basically it is 80, provision under 80 of IAC, as well as now a little bit under the Angels tax, which is also indirectly now under them. Whatever is under the IMG, we have identified that's a bottleneck. So let the government say 45 days for this committee also to say yes or no. If it says no, the committee is responsible. If it says yes, it is not the Department of Revenue official whose head, who thinks that poor guy, deputy secretary who must be coming for the meeting, he must be always afraid, I'll be blamed. It will be a collective decision making, collective credit and collective discredit. I think that's the way out. Yeah, I fully agree. What you said very rightly, and it is the true sense or true spirit. Every person now needs to be made accountable, and that's the only way. Thank you. Including collectively, institutions also, forums also saying, look, 2,000 cases came to you.
Why have you cleared only 20 or 200 in the whole year? So you can't be a forum or a committee without a responsibility or without accountability. सुनील जी मैं एक एक- क्वेश्चन आपसे भी एक क्वेश्चन मैं मैं आपसे आपसे एक बात पूछना ऐड चाहूंगा एक बात ऐड करता हूँ टॉयलेट से Sunil Haji. ji wants to add something. Sunil wants to add something. Go ahead, Sunil. Sir, if you see, surprisingly, CBDT has not come out with any circular. ये जितने नोटिफिकेशन आए हैं एंजल टैक्स से सारे DPIT से आए हैं. Take a chair. Even- हाँ. उन्होंने तो अभी तक उसको नोटिफाई भी नहीं किया है. Sir, this is where the funny part is that और प्रैक्टिकली अच्छा और दिक्कत क्या है सर, जहाँ इनका ऑफिस है विज्ञान भवन में, वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं होता है. That's how it shows that the government is not together on this issue. DPIIT issues circulars half-heartedly, consulting finance ministry and the CBDT, and the CBDT thereafter takes objection, because the DPIIT should straight away say, it is not my job, let the circular be issued by the finance ministry or CBDT, because tax related matters are there, not encroach upon the territory of the finance ministry. Then finance ministry, I'm sure, will behave much more responsibly and much more in time. I think it looks like a case of overreach, if I might say, by DPI. Yeah, Yes. go ahead, Mr. Gupta, you Yeah, wanted to ask. Before Yeah, before I taking just this one, I just wanted to add that I just wanted to add that as the time period Dr. Dua is saying, that's one thing, and also equally if the professionals, the professionals are also recognized by the government departments, whether it is in the banking industry or in the Ministry of Commerce. See, ultimately these startups, they don't have much of the commercial or financial or taxation background. So if the professionals who are working in this field are given due recognition, I think the system can work very smoothly. That is what the so-called 4 lakh innovation hubs which the government, or startup hubs which the government is talking about, which it puts on its website, that almost 4 lakh hubs is actually supposed to be consisting of professionals like you gentlemen. Literally, that has got mentors, people who are willing to guide. They have offered to the government that we will help out the startups in advice on different fields, taxation, on matters of which industry to go in, where to go in. So I would suggest that rather than just putting the numbers, the government should put out the name. If you want chartered accountants, these are 200 chartered accountants whose advice we are willing to accept, or we generally consult. So it will become much easier. But I think that number, I have my doubts on. How many of them 4 lakhs are actually on the ground available to advise on? Yes. Dr. Raj. Yeah. So now next query from Mr. Praveen Sani. Haji, please take up. हाँ जी Anuj ji, हाँ जी सर, हाँ जी. Generally, what is the criteria to register under the startup scheme? Do any company can take registration with DIPPP, or it's require some unique idea only? देखो प्रवीण जी देखिए, मैंने जैसे बताया कि अब जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइडर कर दी गई है. अगर वो जो 5 क्राइटेरिया बताया, इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, और एन आइडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन, तो आप अगर 5 क्राइटेरिया में फिल करते हैं तो आप जा सकते हैं. कोई स्पेशल यूनिक आइडिया की जरूरत नहीं होती. जैसे मैंने बताया, स्विगी क्या करती है, स्विगी रेस्टोरेंट से फूड आके आपको दे देती है, लेकिन वहां पर हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. आइडिया क्या है उनका? दे हैव टेकन ऑल द रेस्टोरेंट ऑन द बोर्ड और वो सप्लाई किए जा रहे हैं, बस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. यू कैन बी स्टार्ट. नेक्स्ट, Dr. Dua. एक मैं बात और ऐड करना चाहूंगा. Sure. अभी मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है कि जब बीपीआईटी
को मर्चेंट बैंक का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो फिर 56 जो 11 यूए का क्या मतलब है? सर दोनों अलग अलग बातें हैं। I just come to that. That's up. Can I just clear the question which was just add to what you have said? I'm reading what has been written. सरकार क्या कह रही है जी? अगर आपने DIPP से या DPIIT से रजिस्टर करना है, that idea work towards development or improvement of a product, process or a service. It is a very wide. ये नहीं कह रही कि आपको टेक्नोलॉजी रहे अब, या जो पहले था कि टेक्नोलॉजी रहना जरूरी है, पेटेंटेड होना चाहिए, IPR को क्रिएट करे, बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, एक बिजनेस मॉडल जिससे बिजनेस ग्रो कर सकती है आपकी, दैट इटसेल्फ सफाइसिंग। बट वो जो बिजनेस ग्रो कर रही है उसके साथ साथ अगर वो आइडिया से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या वेल्थ क्रिएशन होगी, दैट इज ऑल्सो इनफ। So either of the two, the government is quite happy with अगर आप वो प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट नहीं, लेबर इंटेंसिव काम करने वाले हैं, स्केलेबल मॉडल है, वो भी काफी है। मेरे हिसाब से सरकार इसको इतना ज्यादा नहीं देख रही। जब टिल टैक्स एग्जेम्पशन की बात आती है तो क्योंकि आपको 2 या 3 दिन के अंदर ये वेबसाइट पे ही आपको ऑनलाइन मैसेज आ जाता है। तो इट्स जनरली अ वेरी लूज डेफिनेशन बिकॉज द गवर्नमेंट इज वांटिंग मोर एंड मोर पीपल टू गेट एलिजिबल अंडर स्टार्टअप, बट द रियल एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ द IMD व्हेन टैक्स एग्जेम्पशन हैज टू बी गिवन। ठीक है, हाँ जी सर। सी डॉक्टर दुआ से मेरा क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब ये जो आपने अपने फर्स्ट पार्ट में एक बात कही थी कि जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर अब आने वाले समय के अंदर वो ज्यादा एम्फेसिस होगा, तो यहाँ पर अब इस सिचुएशन में जो आज कोविड-19 के कारण से हमारे पास सिचुएशन हो रही है, तो जो इसके अंदर से पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात आती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर सपोज हम लोग लेते हैं, कोई सोचता है अपने स्टार्टअप, तो उसमें क्या सिचुएशन होने वाली है और उसमें क्या स्टेटस रहेगा? Shashi ji, I was guessing so far like you only. Nobody knows what the future is like. But in order to cut costs, I am basing myself on the premise that going forward, cash flow is going to be a problem. Working capital is going to be a problem. People would want to reduce the outgoings from them, and one way is going to be that if I'm going to need a worker for 10 days in a month, or I'm going to need a worker for 2 hours a day, why should I be taking the person for a whole day or for a whole month? So why not farm out that job? It's like we do it in the, it's done in many industries, and in the apparel accessories industry or apparel industry, much larger scale, that ये कपड़ा लीजिए, ये बटन लीजिए, आप कल ड्रेस बना, जितना ड्रेस बना के लाएंगे उस हिसाब से आपको piecemeal पैसा दे दिया जाएगा. So that person doesn't have an assurance of work. He is helped in raw materials, but he gets paid as a contractor. He took the job from you. He's a job worker. He's come and given you. So I am saying that going forward, regular employees will also could turn into so-called informal employees, or what the general term is, gig economy will expand, but not necessarily formal workers. So my suggestion, or for whatever it is worth, is when this starts happening, government has to step in to make sure that formal workers, when they become informal workers, they do not lose their social security. If anything, they have to be, their security has to be increased. They are the most vulnerable one,
and they cost the society the maximum. If something happens, then we have seen you have to look after their food, you have to look after their shelter, and you have to also look after their health. So I am apprehending it will happen, but I hope that it doesn't happen to the extent that it becomes a threat to the stability. Thank you. Dr. Raj. तनुज जी, हाँ तनुज जी, नेक्स्ट क्वेरी प्लीज. सर ये मेरी क्वेरी है. कुछ स्टार्टअप्स को सर दुआ सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कुछ स्टार्टअप को इसमें एनवायरनमेंट में लॉज में भी रिलैक्सेशन दी गई है, 3 लॉज में, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो सर प्लीज? अब जो अभी दिया गया है exemption is for a period of 3 years from the time they come to work, and it is with two types of laws: air pollution and water pollution. 2 laws are, one is applicability of this, the other is the water control, and I think I can just read out the law. I had written it down somewhere. That law is exemption which has been given. I think that it is called the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, and the other is Water Prevention and Control Cess Amendment Act 2003, and the Air Prevention and Central Act 1981. This does not mean that they are allowed to pollute the air, or they are allowed to pollute the water, or they are not required to pollute this if they are polluting. This is an exemption to the extent of self-certification. They have to comply with all these 9 laws, 3 on the environment, 6 on the labor side. All this is needed, but instead of an inspector coming to their premises, the inspector is not required to come. Company certifies whatever is the prescription, monthly, quarterly, 6 monthly, that my company, or I as the karta of that company, is fulfilling all the requirements under the law. And if I am required to pay a fee, cess, I am paying it. So the only difference is, instead of inspector coming and making you fill up the forms and inspecting, you are complying with all the 9 laws, self-certification, and in case you make a wrong certification, somebody complains, it goes to these agencies, and those agencies think that yes, it is like that this complaint can be verified, then we can send the inspectors and to verify the complaint. It is not an exemption. Government might claim exemption. It is only self-certification. If I use the word exemption, I'm sorry, it was very loosely. There is no exemption. It is only self-certification. I hope that was clear enough, sir. Thank you, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेरी प्लीज. सर एक क्वेरी है कि सपोज पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 59 नाउ वो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, कि वो उसको स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिल सकता है? Sorry, what does it want to convert from? From a partnership to? From partnership firm to LLP, which was not registered under section 59 of Partnership Act. Sunil ji, would you like to come first? Yes, sir. बताइए सर. देखिए, एन एलएलपी और ए पार्टनरशिप फ्रॉम और ए कंपनी कैन बी अ स्टार्टअप, रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, लेकिन जहां तक सवाल है पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी पे कन्वर्ट करने का, सर अभी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सके. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू एलएलपी बिकॉज ऑफ द बेसिक डिफरेंस. लिमिटेड लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना, इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. इन केस ऑफ limited liability part, there is a limited liability. Secondly,
our statute, our law of the land does not recognize the partnership from as a entity. It is embedded with the partners only. तो इसलिए वो कोई concept ही नहीं है sir. This is exactly what, that's why I asked for your technical advice. And that is the position. Next. This is the query from Mr. Hemraj. How to execute startup? सर स्टार्टअप की जैसे जो था मैं बताया था, कोई एक डेफिनेशन कहीं नहीं है. जैसे एंजल टैक्स है, एंजल टैक्स भी कहीं डिफाइन नहीं है, स्टार्टअप भी कहीं डिफाइन नहीं है. स्टार्टअप का मतलब है नए, न्यू, स्टार्टिंग. इट कैन बी ए पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी ए कंपनी, इट कैन बी ए LLP. ऑल द थ्री कैन बी ए स्टार्टअप. आयुषी जैन जी हमारी पीपीटी के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो मैं आयुषी जी को कहना चाहूंगा कि पीपीटी ऑलरेडी वी हैव सर्कुलेटेड टू ऑल द ईमेल्स केम टू अस, एंड आल्सो वी हैव सर्कुलेटेड पीपीटी ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. इफ यू आर नॉट देयर, either you send us email at rajchavla@gmail.com or you can send us request on WhatsApp 9811081083 with your name and details, please. Tanuj ji, Hello. please. हाँ जी सर. Sir, please tell you whom and how to approach venture capitalists for DAPP registered organizations. Sir, the nodal agency on behalf of the government is SIDBI, the Small Industry Development Bank of India in Bombay. They have created a section where the money which is put in by DPIIT has been put in a corpus, a fund created by, the fund is managed by SIDBI, and SIDBI will be able to tell you which are the funds, because we are calling this scheme the fund of funds, which are the funds venture capitalists it is funding. And when I say, I think SIDBI has also got a website for this, maybe on the online, but certainly the approaching SIDBI would be worthwhile. मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा. आई वांट टू ऐड, Dr. Dua, SIDBI have now started consultancy also. Yes. But they are giving their own funds of 10,000 crore. And if you are a good startup, you can go to the website of SIDBI. You can get the consultancy. They will tie you with some other venture capital fund if the proposal is okay with that VC capital funding. So they are doing the consultancy also, and a very good consultancy they are now having. Thank you. You can approach SIDBI. सर सौरभ गोयल जी का क्वेश्चन है, प्लीज टेल ब्रीफली अबाउट स्टार्टअप. ब्रीफली तो नहीं बता पाएंगे, 2 घंटे से यही बता रहे थे जी. लोगों को यही कंफ्यूजन है. स्टार्टअप का मतलब भैया कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वही स्टार्टअप है. It should be a partnership firm, a LLP or a private company, and you have to get your registered with the DPIIT. Simple definition. और दुनिया में हर काम, सर मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड करवाया है. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप. तो कोई भी काम दुनिया का, Yeah, it is possible because it's creating employment so much. हाँ सर, everything is covered now. Everything you think of a business, everything is covered. और आपने जो लॉकर जो बर्तन साफ करने की नई नई टेक्निक आपने डेवलप की है ना हैंड्स में, वो भी स्टार्टअप है बाबा. जो घर का काम नई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली हो, अब ये सैनिटाइजर है, ये भी स्टार्टअप है. इफ यू शुड हैव सम न्यू आइडिया, सिंपल. गौरव गोयल जी की क्वेरी है, हाउ टू मेक फंडिंग इन स्टार्टअप, लाइक फर्स्ट फ्रॉम द कंपनी एंड देन इशू एक्स्ट्रा शेयर फॉर एंजल फंडिंग बेस्ड ऑन वैल्यूएशन. बताइए घर साहब. बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टार्टअप की फंडिंग कर रहे हैं. अजीम जी, प्रेम जी करते हैं, रिलायंस फाउंडेशन रिलायंस ग्रुप की कंपनीज करती हैं, टाइम्स वालों का, रतन टाटा करते हैं, 4 बार. सारे जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबने स्टार्टअप्स के लिए अलग एक अपना सेक्शन बना दिया है. वहां पर आप जाइए और बाकायदा स्टार्टअप के सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, आप वहां रजिस्टर करवा लीजिए. अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको फंडिंग मिल जाती है. What authorized capital and paid up capital we should keep at the time of forming the company, and what are compliance requirement for issue of preferential allotment of share to angel investors?
सर जैसे मैंने बताया कि आप एक कंपनी को रजिस्टर्ड कर लीजिए, जैसे आप कंपनी एक्ट में करते हैं। जहां तक एंजल इन्वेस्टर की बात है, आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के साथ में, फिर वो बताएंगे साहब आप हम कितना पैसा डालेंगे। आप इट्स ए प्योरली अ फाइनेंशियल डील, इट देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर दैट। सब वो जो एंजल है ना, वो परिंदा है जो आपको इस बाहर। सिस्टर जी हाँ, एंजल इन्वेस्टर कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, कोई लिस्ट मैं समझ नहीं गया। है। जी ठीक है हाँ, सर, इस सिस्टर कंसर्न आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट कंपनी। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। सिस्टर कंसर्न या नॉन सिस्टर कंसर्न का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना सर। एनी कंपनी रजिस्टर्ड। आप टैक्सेशन के व्यूज, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दीजिए। स्टार्टअप स्टार्टअप सर ओनली सर्विस इंडस्ट्री कैन गो फॉर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन आल्सो। एनी कंपनी कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। कोई भी जा सकता है। सर स्विगी, जोमेटो, शटल, नाइका, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब स्टार्टअप है। एनी कंपनी, एनी फर्म कैन गो फॉर द स्टार्टअप सर। लोगों को मैं फिर बताता हूँ, लोगों को एक कंसेप्ट है कोई स्टार्टअप कोई नई चीज नहीं है। जैसे एनजीओ हमने सुना होगा, एनजीओ को नई चीज नहीं होती सर। एनजीओ या तो ट्रस्ट होता है, या सोसाइटी होती है, या सेक्शन 8 कंपनी होती है। एज ए स्टार्टअप है, आइदर इट विल बी ए पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी और ए प्लेटफॉर्म कंपनी, नॉट न्यू। जी सर। Should we charge you for consultancy? I do not know whether they charge or not. You can contact them directly, sir. नहीं साहब, Is वो it- बाय एंड लार्ज वो फ्री कंसल्टेंसी है। उन्होंने भी अपना, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डीपीआईआईटी ने अपने कुछ रखे हुए हैं मेंटर्स इत्यादि, उन्होंने भी रखे हुए हैं। बट हाँ ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। डीपीआईआईटी भी कंसल्टेंसी देती है सर। जी हाँ, और उसके जो बहुत बड़ा कोई कंसल्टेंसी जिसमें उन्होंने आगे किसी को काम देना पड़ा, then they adjust that in terms when they make the investment. By and large, it be in this matter is much more on a promoter basis, service basis rather than commercial. सीए दीपक पुष्पा राणा जी की क्वेरी है, मैन्युफैक्चरिंग ई रिक्शा कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप currently working as a proprietorship from last 3 years by converting into company. No problem, sir. ई रिक्शा वाली कई कंपनीज हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, पर अपना इनकॉर्पोरेशन जब से ये लेंगे तब से वो गिना जाएगा। इवन इफ दे आर एग्जिस्टिंग टुडे, दी ई रिक्शा, बिकॉज ई रिक्शा में अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ कि भाई बैटरी कैसी लगनी है, आपके कितना वजन होगा। वेरियस डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, so everybody is working towards improving the product. It is ठीक है सर। registrable. Next query is during process of takeover of private limited company, is intangible asset can be taken over? Of course. अगर आप सेक्शन 47 में, मनोज जी देखो सेक्शन 47(13)(b) में जहां टेक ओवर की बात है, उसमें कंडीशन यही है कि यू हैव टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग वेदर इट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल। मनोज जी, यू वांट टू ऐड? So that's fine. हाँ जी How सर, to आप यू वांट टू ऐड समथिंग सर? नहीं ठीक बोल रहे हैं सर, आप बढ़िया बोल रहे हैं। how ठीक we बोला get, आपने। we get eligible business certificate from IMB? सर क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि डीपीआईआईटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर 2 फॉर्म दे रखे हैं आपको। एक फॉर्म है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन से कहते हैं, ठीक है सर। एक उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है, जैसे मैंने बताया था 56(2)(7)(b) के लिए कोई फॉर्म नहीं है, सिंपल डिक्लेरेशन है कि हमने ये असेट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। और ये जो जब मैंने लास्ट सर्कुलर बताया था 127G, उसकी सारी कंडीशन मैं पूरी कर रहा हूं तो आपको स्यू वोटर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। दिक्कत है ATIA के लिए, जो ये IMG का सर्टिफिकेट है, उसके लिए आपको फॉर्म 2 फाइल करना होता है।
फॉर्म 2 फाइल कर दीजिए। उसमें टाइम लगता है, मतलब आता भी है, उसमें बड़ी क्वेरीज आती हैं, पेशेंस से आप उसको फॉलो अप करेंगे तो मिल जाता है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है सारे प्रोफेशनल्स को, जो DPIIT है वो प्रोफेशनल्स की मेल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको जो स्टार्टअप है उसी की मेल से ही कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है, उसमें ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दे डू नॉट एंटरटेन प्रोफेशनल्स मेल, ओनली द ठीक है स्टार्टअप सर। मेल। ये मनोज जी की क्वेरी है, मनोज जी आप ही रीड करें प्लीज। मैं ही पूछ लेता हूँ सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, रादर आइडिया है एक, कि मैंने हाँ, जो बताओ फील ना। किया है बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो फंडिंग नहीं जुटा पाते। जो गवर्नमेंट की तरफ से, एक मिनट सर मैं पहले पूरा बोल लूं, 10,000 करोड़ का जो फंड बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से 25-2500 करोड़ करके आने थे, लेकिन जितने भी छोटे स्टार्टअप्स हमने अपने शहरों में देखे, स्मॉल सिटीज में, वो आए बड़े इनोवेशंस के हाथ, लेकिन जैसे ही बड़ी कंपनी आई जिनको फंडिंग मिल गई, जैसे जोमेटो की बात की आपने, स्विगी की बात की, उबर की बात की, ओला की बात की, ओयो की बात की, उन्होंने उनको खत्म कर दिया। तो इसलिए स्टार्टअप में ये जरूरत है कि हम शुरुआत से ही उनको कुछ फंडिंग दें, सहारा दें, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को इस बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उनको स्टार्टअप को फंडिंग कहां से अरेंज करा सकते हैं। सिर्फ स्टार्टअप को आगे आने से कुछ नहीं होगा, मेरे आइडिया से कुछ नहीं होगा। मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, काफी टाइम से मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं और बहुत ही इनोवेटिव है, लेकिन आज तक मैं फंड रेज नहीं कर पाया उसके लिए। It's तो so वो tricky. बाद में सुनील जी को फोन कर लेना ना, आप तो जानते हो उनको I पर्सनली। think you probably came a little late. बाद में बात करते हैं मनोज जी, बाद में बात करते हैं। I Next. said that 27,000 recognized small or startups, actually funding has actually flowed only to less than 300 companies. जी The हमारा all other- रजिस्टर्ड है। जी हाँ, 27,000 में से जी ये जो फंड है सरकार का, जिसमें अभी तक डिस्बर्समेंट 1600 करोड़ हुई है, जब 10,000 करोड़ का ये चौथा साल है, और जी। वो आपने रन करने को दिया है बैंकर को, सिडबी में सब बैंक, कंजर्वेटिव बैंकर्स, इवन इफ दे आर इन प्रमोशनल, सिडबी जो सरकार, उनको भी फिक्र यही है, कल फेल हो गया, एनपीए बन गया तो मेरी नौकरी का क्या होगा, जैसे बाकी कमर्शियल बैंक्स में है, वो डरे हुए। ये आपको मेरे हिसाब से इनिशियल सीड कैपिटल देना बैंक्स को नहीं चाहिए। सीड कैपिटल सरकार अपने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप को ले आए, ये नहीं जो वो टैक्स दे रहे हैं वहां डिसीजन मेकिंग 5-7 लोग लेंगे, सबका सिर कटेगा या किसी का नहीं कटेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें आइडिया अच्छा लगा था, हमने इसलिए उनको 50 लाख दे दिया। 50 लाख यूटिलाइज हो गया तो हमने कहा अगर आपका ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है हम 50 लाख और दे सकते हैं, बाकी फिर उसके बाद जब टेक ऑफ हो गया आप कमर्शियल बैंक के पास जाइए। सीड कैपिटल का कॉन्सेप्ट चाहिए, जो हमने इस 10,000 करोड़ वाले पैसे से हम नहीं कर रहे, हम कमर्शियल लेंडिंग और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ मिलके कर रहे हैं कि सरकार का पैसा किसी और के थ्रू, और वेंचर कैपिटलिस्ट को ठीक है आपने कहा है कि जितना सिडबी ने पैसा लगाया उतना आपको भी लगाएंगे, पर सिडबी ही जब अपने हाथ से नहीं आगे जाने देता तो उनको कैसे पहुंचेगा। तो सीड कैपिटल स्कीम का अमेंडमेंट होना और सरकार अपने आप चलाए उसकी आवश्यकता है। सर ये शशांक बर्मन जी की क्वेरी है, हाउ विल द असेसी नो दैट द स्टार्टअप हैज इन्वेस्टेड द मनी इन परचेज ऑफ एसेट्स? सर उसमें मैंने बताया था कि आपको प्रोहिबिटेड असेट्स की एक पूरी लिस्ट दे रखी है, उस प्रोहिबिटेड असेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको डिक्लेयर करना होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि जो फॉर्म ITR 5 और ITR 7 फॉर्म में भी इस बार ये चेंज आ गया था कि आपने अगर स्टार्टअप है आप तो आपको डिक्लेरेशन देनी थी कि आपने प्रोहिबिटेड असेट्स में इन्वेस्टमेंट की है कि नहीं की है। ये दिनेश कुमार जी की क्वेरी है, कैन स्टार्टअप बी रजिस्टर्ड विद नॉन रेजिडेंट्स और फॉरेन सिटीजन्स? प्लीज एलोबरेट मोर ऑन इट। इफ देयर इज ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन
Indian LLP, can this LLP add new foreign partner to global scale business? व्हाई नॉट? उसमें किसने मना किया? आप एलएलपी में फॉरेन पार्टनर्स ला सकते हैं, कंपनी में फॉरेन डायरेक्टर ला सकते हैं, बट यू हैव टू सी द इम्प्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट, जो वहां पे कंडीशन दे रखी है। तो दिस डीपीआईटी डजंट बार और इनकम टैक्स डजंट बार एनीथिंग। आपको देखना कि जो एलएलपी में कंडीशन है वो पूरी करनी है आपको एक्ट में। सर, ये दिनेश जी की क्वेरी कंटिन्यू हो रही है। हाउ सीए कैन पर्टिकुलरली एंटर इनटू स्टार्टअप फॉर देयर सीए सर्विसेज? गिव एनी एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर स्टार्टअप ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन these professional services. कहना क्या चाह रहे हैं ये? सर मैं एलोबरेट करूं इसको थोड़ा सा? हाँ बताइए प्लीज। दिनेश जी का जो क्वेश्चन है ये है कि अगर सीए कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो वो अपनी प्रैक्टिस कैसे डेवलप कर सकता है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, अभी पुणे में 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो रेदर देन स्टार्टिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस दे स्टार्ट ए स्टार्टअप, जिसमें वो छोटे छोटे काम जैसे हमारे पैन से लेके टीडीएस रिटर्न से लेके इनकम टैक्स रिटर्न्स, कंप्लायंसेस करना शुरू किया। पहला क्लाइंट उन्हें गेट करते हुए 6 महीने लगे। आज उनके पास 10,000 से ज्यादा क्लाइंट हैं 1 साल के अंदर और करोड़ में टर्नओवर है। तो सीओपी छोड़ के आप अलग से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और सारे काम वो कर सकते हैं। सीओपी के मोह को छोड़ना होगा। वो तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तनुज जी मोह को छोड़ दो तो तनुज जी प्लीज। हेलो सर, स्टार्टअप्स को राइट इशू सेक्शन 62 है जो कंपनीज एक्ट का, उसमें कुछ रिलैक्सेशन है सर? सर कंपनी एक्ट वाले बताएंगे, कंपनी सेक्रेटरी साहब। चलिए सर, आयुषी जैन जी का क्वेश्चन है, कैन 1 year old पार्टनरशिप फर्म बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी टू क्लेम 80 IAC एंड रिकॉग्निशन एज? There is no provision in the act for converting a partnership firm. सर पार्टनरशिप फर्म को तो डिसॉल्व ही करना पड़ता है और कोई तरीका ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होती है। ये मिसकंसेप्शन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्टनरशिप नाम की चिड़िया को जानता नहीं है, केवल इनकम टैक्स एक्ट जानता है। बाकी तो पार्टनर्स के नाम से तो असेट नहीं ले सकते आप पार्टनरशिप फर्म के नाम से। कपिल धारीवाल जी की क्वेरी है, व्हेन वी शुड अप्लाई एग्जेम्पशन फॉर एंजल टैक्स बिफोर इशूइंग ऑफ शेयर और लेटर एनी टाइम? आप 56(10) की बात 7 की बात कर रहे हैं सर। जैसे ही आप इशू करते हैं आप अप्लाई कर दीजिए, और या आपने प्रपोज उसमें एप्लीकेशन में इटसेल्फ ही दे रखा है प्रपोज इशू पे, तब भी आप कर सकते हैं उसको। सर ये पायल सिंह जी की क्वेरी है, काइंडली प्लीज एलोबरेट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ स्टार्टअप अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देखो मैंने अभी मेरे पास भी बड़ी क्वेरी आई है, मैंने फिर आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ सर। जो 56(2)(7)(b है वहां पर 11 UA के 2 पार्ट कर दिए सरकार ने। अब पहले 11 UA सेक्शन 1 सबसेक्शन, 11 UA सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 है जहां पे आपको 56(2)(7)(b के लिए आपको वो करनी है वैल्यूएशन। उसमें सिंपल सा तरीका है, बुक वैल्यू निकाल लीजिए। जो बुक वैल्यू निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी बुक वैल्यू हो जाती है। तो जो सेकंड मेथड है वो दे रखा है वैल्यूएशन बाय द मर्चेंट बैंकर एट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये ऑप्शन दोनों आपकी है। लोगों ने मेरे से एक सवाल और पूछा कि डीपीआईआईटी ने तो मांगी नहीं है। भाई देखो दोनों बातों को फर्क समझो। डीपीआईआईटी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वैल्यूएशन नहीं मांग रही है, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 56(2)(7)(b है, ये उसके लिए वैल्यूएशन है कि अगर आप उसमें से बाहर नहीं आए तो आपको लग ही आएगा ना 56(2)(7)(b। तो उसका वैल्यूएशन का मेथड उसमें दे रखा है। अगर आपने 50CA सेक्शन में शेयर को ट्रांसफर किया है, जैसे 50C इमोरल प्रॉपर्टी के लिए होता है, 50CA ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर, तो आपको 11 UA के सबसेक्शन 1 में जाना है। उसमें आपको क्या करना है, आपने बुक वैल्यू ऑफ शेयर जो निकालनी है उसमें असेट साइड में 4 असेट्स को निकाल दीजिए। पहले ज्वेलरी को निकाल दीजिए, आर्टिस्टिक पेंटिंग को निकाल दीजिए, इमोरल प्रॉपर्टी को निकाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सिक्योरिटी निकाल दीजिए। उनकी निकालिए मार्केट वैल्यू। तो इस मार्केट वैल्यू निकालने के बाद में और जो बाकी नेटवर्क बची उसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में फिर उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे, नेचुरली वो ज्यादा आएगी। तो दोनों में ये फर्क है 11 UA 1 11 UA 2 में।
You want to add something, Manoj ji? मेरी Next. मेंबर से हाँ, मेरी मेंबर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्वेरीज बहुत है, हालांकि अभी कुछ और हम क्वेरी ले रहे हैं, कोई भी फ्यूचर में भी या बाद में कुछ क्वेरी रह जाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे सारे जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, हमारे स्पीकर्स हैं, दे आर देयर। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9811081083 पे अपनी डिटेल्स के साथ रिक्वेस्ट कर देंगे, तो आई विल ऐड यू टू that group, and we will continue this question answer section later on also. Now next query, sir, in which form we need to apply DPIIT and in IMG? Sir, there are two forms. वेबसाइट पे जाएं Sorry. Go और ahead, Dr. Sir. स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे चले जाइए, DPIIT की वेबसाइट पे चले जाइए, वो उसको वहीं लेके जाएगा। स्टार्टअप इंडिया भी DPIIT के ऊपर फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जैसे मैंने बताया, 2 फॉर्म वहां दे रखे हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत लंबे चौड़े फॉर्म नहीं है, बहुत टेक्निकल नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। और जो रिक्विजिट फॉर्म है, जैसे सर ने बताया था शुरू में, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, एक राइट अप है, और ये चीजें आप वहां लगा दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन आता है IMG के अलावा। बाकी 3-4 दिन में अपने आप आ जाता है वो। What is major difference between startup and MSME? Should one get registered under both? जी हाँ, आप स्टार्टअप के बेनिफिट्स अलग हैं, MSME के बेनिफिट अलग हैं। MSME की रजिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के नीचे है। वो एक चीज होती थी, आपको याद हो, कई जगह अभी भी फंक्शनल है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। डिस्ट्रिक्ट में भी इंडस्ट्रीज का जो ऑफिसर होता है वो कर देता है। और ये जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप वाली, वो ओनली DIPP और DPIIT दिल्ली में करता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूनिट कैन बी स्मॉल स्केल ऑल्सो। एक्चुअली मोस्ट ऑफ दीज यूनिट्स स्टार्ट विद आर स्मॉल स्केल। ये कपिल धारीवाल जी की क्वेरी है, फॉर इशूइंग इक्विटी नीड वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट बैंकर एज पर कंपनीज एक्ट, देन how this happen that as per income tax act it is optional for valuing under section 50CA or 56(2) clause 7B? Sir, it is not optional, it is mandatory as per rule 11 UA you have to take the valuation। जैसे मैंने पहले बताया 50CA की वैल्यूएशन अलग है, सबसेक्शन 1 में दे रखी है। 56(2) में 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बुक वैल्यू निकाल लीजिए या मर्चेंट बैंकर से वैल्यू निकाल लीजिए। जिसकी मान लो वैल्यू ज्यादा है, उसे लगता है मेरी वैल्यू बुक वैल्यू ज्यादा है, तो DCF से निकाल लेता है। और तीसरा मेथड 56(2)(7B में दे रखा है कि आपने जो AO है उसको सेटिस्फाई कर लीजिए। वो कैसे सेटिस्फाई करना है वो आपको जानते हो, तो उससे वैल्यूएशन निकलवा लीजिए। तो तीनों आपके पास हैं, लेकिन आपकी ऑप्शन नहीं है, इट इज मैंडेटरी, इट इज ए रिक्वायरमेंट बाय द गिवन बाय द सेक्शन इटसेल्फ। और 50CA में जो रूल 11 UA में 2 पार्ट है, मैंने पहले ही बताया था, उसमें 2 क्लॉज है, B और C। आपको अगर इक्विटी शेयर करना है तो जो मैंने पहले मेथड बताया वो है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूएशन करनी है तो वो मेथड नहीं लगेगा, फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से या मर्चेंट बैंक से वैल्यूएशन लेनी। सतीश सिंह जी की क्वेरी है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग पेटेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ स्टार्टअप बाय DPIIT? DPIIT ने बड़ी अच्छी स्कीम दे रखी है पेटेंट के लिए। 80% तक का वो आपको सब्सिडाइज करते हैं पेटेंट रजिस्ट्रेशन। और जैसे मैंने बताया था, सेक्शन 115 BBF और इंट्रोड्यूस कर दिया है सरकार ने, जबकि सेक्शन सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर द स्टार्टअप। आप 10% पे अपनी इनकम को टैक्सेबल कर सकते हैं, ये आपकी ऑप्शन है। आपकी ग्लोबल इनकम भी 10% टैक्सेबल होगी 115 BBF में। Garg Sahab, I think what we need to, the gentleman Mr. Singh wants to know is the chances of getting a patent if you are a startup. I think the assurance by the DPIIT is that you will be on a fast track. The Controller General Patents Office will look at your request quickly and at a lower application fee, lower by 80%. But the fact that you are a startup, your item will be patented, I don't think that is an assurance at all, because it is quicker attention at a cheaper rate. But because the patent law, the entire procedure for grant of patent procedure and the requirements
are entirely different, and they are aligned to international patents under WTO and other regimes. So I don't think any dilution on the patent law is possible. I'll say quick attention, keep attention, but no result assured. Thank you, sir. Gaurav Goyal ji की query है, how and for what purpose we will be able to use premium received over face value, as Companies Act specified only 5 purpose to use premium received through issue of equity. सर देख, हाँ जी, हमारे योगेश गुप्ता जी कहाँ गए जो कंपनी सेक्रेटरी हैं? चलो कोई नहीं. As per my opinion, सर, कंपनीज एक्ट में जो पर्पस दे रखे हैं वो कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं वो इनकम टैक्स, उससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं सर. बाकी कंपनी सेक्रेटरी कैन बेटर टेल यू दिस एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न. तनुज जी, ये क्वेरी रीड करा प्लीज. आवाज. Set parameters should be defined, and if these are met with, these are met, should be empowered to reject a case unless something brings something adverse duly recorded. ये तो सर कोई जनरल सी बात है, कुछ क्वेरी नहीं है इसमें. I think the Garg साहब, ये जो कहा जा रहा है, मैं I can understand उनका डायरेक्शन क्या है, that do not arbitrarily reject applications which are made. I think it's not for registration or recognition, because that is near automatic. That IMG which rejects it, it should, what are the principles it is looking at, what are the bases on which it grants and rejects. I don't think it's difficult for them to put out 100 things. हमने जो 200 cases reject किए हैं, these were the basis. हमने जो 100 cases approve किए हैं, these were the basis, so that this becomes the role of a mentor. This becomes the role. Government as a whole has to function to push startups. It cannot be startup is the function of DPIIT, and it is not the function of the right hand of the government. This might be Ministry of Finance, others. This will bring much greater transparency in the working of the government. ये रमन सेठ जी की क्वेरी है, सर प्लीज क्लैरिफाई हाउ द सर्कुलर इशूड बाय DPIIT इज एक्सेप्टेबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT. सर जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है DPIIT ने, दैट इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 56 to 7B, because CBDT has not came with a different notification, as I already mentioned in my deliberation also. तो वही नोटिफिकेशन लागू होगा, और जो नोटिफाई होता है सर गजेट ऑफ इंडिया में, वो सब पर ही लागू होता है. वी आल्सो बोरो सर्कुलर फ्रॉम अदर स्टैच्यू आल्सो, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है इसमें. Garg sahab, in addition, the circular always, the last line of it says this issue in concurrence with Ministry of Finance. Yeah. नीरज कुमार जी की क्वेरी है, प्लीज डू शेयर फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ न्यू स्टार्टअप एज वेल, हाउ स्टार्टअप कैन टेक फंडिंग फ्रॉम बैंक्स अंडर वेरियस स्कीम्स. सर देखिए, जैसे अभी मनोज से बात हुई है, पहले ही बात हुई है सर, ये जो फंडिंग करने का डिसीजन होता है वो इन्वेस्टर का होता है, इन्वेस्टर की प्रूडेंस पे डिपेंड करता है. इफ यू थिंक द प्रोजेक्ट इज गुड, इफ यू थिंक एवरीथिंग इज गुड सेट, और मुझे प्रॉफिट आएगा इससे, तो वो फंड करेगा. लेकिन देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म नाउ, सिडबी इज वन ऑफ देम, others are Ajimji Premji Foundation or Reliance, or so many foundations are there. You can present your case before them on their website, and if they call you for funding, you will get the funding. It is a simple case, it is a general case, no specific things is there. टीना गोस्वामी जी की क्वेरी है, प्लीज एक्सप्लेन हाउ इनिशियल कैपिटल इम्प्लीमेंटेड इन स्टार्टअप, वेदर सम फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट टू हेल्प देम. SIDBI has the fund, as Dua Saab has said. SIDBI has the fund as the consultancy also, but it is not so simple to get the funds for the startup, because there is a risk involved. And you know, out of the startup they started, most of them get defunct or most of them get outdated. So it's not so simple. और ये डिसीजन तो फिर बैंकिंग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही होता है सर, इसमें कोई स्पेशल. Madam Tina ji, I like to
come back to it, I remember almost 40 years or 35 years ago in Maharashtra, when I was in the Industries Department of Government of Maharashtra for entrepreneur developmentship. उस टाइम स्टार्टअप नहीं कहते थे, purpose was the same. Government of Maharashtra had seed capital scheme to give to a person who said, I am setting up a 10 lakh रुपए investment की मैं यूनिट, मुझे आपकी स्कीम के नीचे 10%, 15%, if it was schedule caste उनको 15% दी जाती थी. All that I am saying, under startup, Government of India can also, what was happening 35 years ago or 40 years ago in some of the states like Gujarat, Maharashtra, and even Karnataka, I recall that. That is the way, then many more people will be able to experiment. If you are deliberately frauding with the money, you can be held liable. But if that project doesn't take off, neither the team which has sanctioned it nor the person who has received it should be held accountable beyond just a simple explanation. Only then the startup boom will take place. मनीष बत्सूचिया जी की क्वेरी है, कैन स्टार्टअप रजिस्टर्ड कंपनी इशू ESOP टू डायरेक्टर प्रोमोटर्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज? बहुत बढ़िया सवाल पूछा मनीष जी आपने, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ESOP देते हैं, अगर वो आपका रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो आपकी टैक्सेबिलिटी होगी 17(2)(6) के हिसाब से, जो मैंने बताया था परक्विजिट में जाकर. और अगर आपने डायरेक्टर को दे दिया, प्रमोटर को दे दिया, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो 56(10) में जाके आपकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी. तो दोनों में बहुत फर्क है. और जो नया चेंज आया है 192(1)(c) में आया है, अगर आपने डायरेक्टर्स को दिया या प्रमोटर्स को दिया तो 4 साल वाली कंडीशन आपको नहीं लगेगी भैया, केवल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कंडीशन है वो. ठीक है सर, मनोज जी, यू वांट टू ऐड? तो दोनों में फर्क है, डायरेक्टर फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क है दोनों में. हाँ जी, इसमें सुनील जी मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक ESOPs हैं टू बी इशूड टू द डायरेक्टर्स, देयर इज अ कंडीशन कि इफ द डायरेक्टर्स आर होल्डिंग मोर देन 10% राइट ऑफ द शेयर होल्डिंग, देन ESOPs कैन नॉट बी इशूड. अच्छा, वो मुझे नहीं पता. मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था कि इनकम टैक्स में अगर दोनों को करेंगे तो दोनों की टैक्सेबिलिटी अलग हो जाएगी मेरे हिसाब से. वहां पे जाएगा सैलरी के केस में 17(2)(6) में, यहाँ जाएगा 56(10) में. वहां सिंपल केस होगा कि जहां आपको विदाउट इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में कोई चीज मिलती है तो, और आपको वो भी लागू नहीं होगा 4 साल वाला कंडीशन भी. अगर कंपनी की आपको कोई कंडीशन है तो आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ दैट. यस. So thank you everyone. I request CA Shashi Gupta ji to please present formal vote of thanks. Thank you, Raji. Indeed, it was a wonderful webinar in which we could hear the views of very learned people like Dr. Dua and Sunil ji, and जो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बड़ी माइन्यूटली और बड़ी पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को उन्होंने एड्रेस किया. और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इस पूरे के पूरे वेबिनार को में पार्टिसिपेट किया. हमारे लर्नर्ड स्पीकर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं अंत में हमारे राज चावला जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो इतने बढ़िया प्रोग्राम्स कर रहे हैं रेगुलरली, और इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर वो हम सबको बिल्कुल तैयार होके एकदम से 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे वेब कैमरा के सामने बिठा देते हैं और हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, और हमारे को पता ही नहीं लगता कि हमारा समय कब बीत गया. और समय के साथ साथ और हमारे को बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलता है. बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. थैंक यू सर. आज भी हमें लगभग 300 लोगों ने YouTube चैनल पे और लगभग 300 ही Facebook चैनल पे लोगों ने हमें देखा है. और ये जो हमारी वीडियो है ये अवेलेबल होगी अभी थोड़ी देर के बाद YouTube चैनल पे. और जो मेंबर्स इसकी वीडियो का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, प्लस जो हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम हैं उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा.
With these words, I am thankful to all of you. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Sunil Bhai. Thank you, Shashi ji. Thank you, Manoj Bhai, and thank you, हमारे तुषार जी. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you all of you. Dr. Raj Saab, thank you so Thank much. you, Shashi ji. Thank you. Thank you, Lamba Saab, and thank you. Thank you.